of the syllabus. तो यहाँ पे देखिए, ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि दक्कन इंडस्ट्री वर्सेस टेपर यूरी, इसका जजमेंट क्या था। तो जजमेंट में कुछ लंबा लिखा हो सकता है, सही है, या जजमेंट क्वेश्चंस में हो ये किस केस का जजमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है दक्कन इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ द यूपी, तो यहाँ पे जो दक्कन इंडस्ट्री थी वो हैंडलिंग सम फर्टिलाइजर प्लांट, और जब उन्होंने प्लांट गोइंग कंसर्न पे सेल आउट किया तो दे पे स्टैम्प ड्यूटी ओनली फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग, दे डू नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में गई और बोली भाई प्लांट एंड मशीनरी पे भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी हैज ट्रीटेड प्लांट एंड मशीनरी एज ए मूवेबल एसेट। बट कोर्ट ने बोला कि भाई आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है इट इज अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड कंसिडर देम लायबल पेमेंट फॉर द स्टैम्प ड्यूटी टू ट्रांसफर। क्यों इनमूवेबल प्रॉपर्टी? बिकॉज यू कैन नॉट ट्रांसफर रीलोकेट योर प्लांट without damaging it or without damaging real estate attached to the it। तो आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सही है। तो दक्कन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो प्लांट एंड मशीनरी है इज कंसिडर एज ए इनमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड लायबल फॉर द स्टैम्प ड्यूटी पर्पस। ये 1 मार्क का है और 6 केस स्टडीज है। सेकंड केस है आपका सीपुर पेपर मिल versus a collector of the central exercise. Sir, Okay. one moment in this regard. Like land and building, we have a ready reckoner value available for stamp duty purpose. But where we will get this value for stamp duty for plant and machinery? सर वो एज ए वैल्यूअर को फाइंड करनी पड़ेगी, वो रेडी रेकनर ड्यूटी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई वैल्यूअर इज अपॉइंटेड, सही है। वैल्यूअर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू अराइव करके लाएगा उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसीलिए वैल्यूअर अपॉइंट किया जाता है। अगर वो रेडी रेकनर रेट होते मशीनरी के तो वैल्यूअर अपॉइंट नहीं होता शायद। क्लियर? Yes, yes. ओके। So यहाँ पे the appellant contend that machinery permanently attached to the ground, the machine cannot be worked until and unless the same was attached to the earth as a permanent fixture. It was further argued that machine cannot ordinarily be sold in the market. The nature of the machine such that it cannot be transferred or offered for sale to any other parties. An argument was also advanced that machine was erected to turnkey basis at a very place where machine is ultimately embedded and contract based and permanent fixture. ओके, यहाँ पे बोला गया भाई मशीनरी को परमानेंटली अटैच कर दिया गया है विथ लैंड सो इट कैन वर्क फंक्शनली प्रॉपर, तो इट इज अ इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो इसके जजमेंट में क्या था कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड इन अर्थ फॉर द बेटर फंक्शनिंग इज डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, अगर प्लांट एंड मशीनरी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अर्थ के साथ लगाया गया है तो इस डजन बिकम अ इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब ऐसा नहीं बोला है कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, एनीवन? क्यों ऐसा बोला गया? इन इट डजन नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। Can be, if required, it can be removed without any damage. Then नहीं नहीं नहीं,
देखिए हमारे No, it can. प्रॉपर्टी एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इनमूवेबल की डेफिनेशन है, अच्छा। इनमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं है। ओ, अच्छा अगर अच्छा। आपको कुछ बोलना है कि एसेट मूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि इट इज अ नॉट अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। ओ, समझे? हम्म, फिर आप कोई भी एक्ट फाइंड करोगे वहां पे मूवेबल एसेट का, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं है। आपको वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक अ वेसल, एयरक्राफ्ट आर कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा एग्जांपल दिया गया, बट डेफिनेशन नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पे सीपुर पेपर मिल वर्सेस कलेक्टर ऑफ द सेंट्रल एक्सरसाइज में जो प्लांट एंड मशीनरी को इनमूवेबल, नॉट अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया था, मतलब के मूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया था। अलग अलग हो गया ना सर, डंकन का अलग हो गया, सिपुर का अलग हो हाँ, गया। तो यही तो है। ऑफिसर लिक्विडेटर वर्सेस रिक्रेशनल डीओ, ये जजमेंट क्या बोलता है? द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द कंपनी आर आइदर एम्बेडेड इन द अर्थ और दे आर परमानेंटली fastened to thing attached to the earth. It is consented that most of the machinery fixed to their bases with a bolt and nut, and they cannot be removed by removing the nuts. It is therefore contended that such a machines can be moved away by removing the nuts, should be held to be movable properties. अब किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को सही से फंक्शनिंग कर ही सके, उसके साथ ग्राउंड को अटैच करने के लिए नट बोल्टिंग ये सब करना पड़ेगा। सही है? तो हाँ। इस केस में भी क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी वेल हेल्ड एज अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑफिशियल लिक्विडेटेड वर्सेस सेकंड डाउ में भी उसने ये बोला कि प्लांट एंड मशीनरी आर इनमूवेबल प्रॉपर्टी। हम्म, उसके साथ में क्या बोला? द क्वेश्चन वेयर मशीनरी विच इज अनेबल टू अर्थ is movable property or immovable property depend upon the fact and circumstances of the each cases. यस तो यस। हर केसेस में आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल है कि इनमूवेबल। ओ, डायरेक्टली यू कैन नॉट से कि प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल, हर केस में आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। यू कैन रिस्टोर एज प्लेस विदाउट डैमेजिंग एसेट और विदाउट डैमेजिंग रियल एस्टेट अटैच विथ इट। अगर यस तो मूवेबल, नो इनमूवेबल। That will be decided by valuer only. सॉरी, डिस्कशन किसका सर, वैल्यूअर का? वैल्यूअर का जजमेंट रहेगा वो। ठीक। हम्म, सही है? तो प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल है कि इनमूवेबल, वो क्लासीफाई केस टू केस बेसिस पे करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द सर्कमटेंस ऑफ द ईच केसेस। हम्म, सही है? तो ये तीन केस थे, दक्कन इंडस्ट्रीज, सीपुर मेपल मिल्स एंड ऑफिसर और लिक्विडेटेड। ये तीन केसेस है रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीनरीज इनमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, एक केस है केस स्टडी रिलेटेड टू द साइमैक्स होल्डिंग वर्सेस कमिश्नर ऑफ स्टेट रेवेन्यू, सुप्रीम कोर्ट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, की वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड मशीनरी बाय कॉस्ट अप्रोच इज सब्जेक्ट टू पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटीज। इसका मतलब क्या होगा? एनीवन? कॉस्ट अप्रोच। सर अगर It पोटेंशियल is, प्रॉफिटेबिलिटी है तभी कॉस्ट प्रोसेस को मैं वैल्यूएशन कॉस्ट अप्रोच। if उसका it is प्रॉफिट आ cost, रहा है I नेट mean, कॉस्ट। if it gives profit, then only वैल्यूएशन का वैल्यू ज्यादा होगा प्रॉफिटेबल प्लांट। तो प्रॉफिट। कॉस्ट अप्रोच से वैल्यूएशन किया जा सकता है बशर्ते कि प्रॉफिट में चल रही है यूनिट। अगर asset are generating the profitability, then only you can do valuation by the cost approach. अगर profit, potential profitabilities नहीं है asset में, तो you can not do valuation by the cost approach. हम्म,
अगर पोटेंशियल प्रोबेबिलिटीज नहीं है तो यू कैन गो विद द मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच। नहीं तो बहुत बार फॉर द वैल्यूएशन पर्पस हम उसके बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट्स मांगते हैं। क्यों एनुअल रिपोर्ट्स या बैलेंस शीट मांगते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए। प्रॉफिट प्रॉफिटेबल है तो या नहीं। वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। सही है? राइट राइट सर, यस। ओके। फोर्थ केस है, इट इज रिलेटेड द ऑब्सोलेशंस। सो विस्टिंगसन हाउस इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशंस, ये जो कंपनी थी, the property under consideration was designed for the fabrication and assembly of a steam turbine component into turbine used for the generation of the electric power, both nuclear and fossil fuel powered installations। मतलब ये कंपनी थी, टरबाइन बना रही थी, जो टरबाइन न्यूक्लियर और फोसिल फ्यूल के लिए यूज किए जाते थे। It had a ceiling height of the 80 feet height with a overhead twins craneway, extremely high capacity, extremely heavy industrial floors, foundations, specialized cooling capacity, river water and other features made adaptable of the heavy industry। मतलब उसने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज करने के लिए बहुत ही अच्छे सुपर स्ट्रक्चर्स बनाए थे। अब ओवर अ टाइम क्या हुआ भाई, द मार्केट ऑफ सच ए टर्बाइन ग्रेटली डिसमिस्ड। So due to the reduce of the market for the turbine, the number of workers employed apparently declined and usefulness of the property to the taxpayer has substantially decreased। मार्केट में टरबाइन की डिमांड नहीं बची तो दे स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टरबाइन, और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का स्ट्रक्चर था दे आर यूज्ड फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर्पस। The plant was no longer used for the production of the turbine, but was employed in a repair of the turbines। मतलब जो सेल आउट हुए थे वो टरबाइन रिपेयर करने के लिए। नाउ मतलब कि बिल्डिंग हैज अ लूज इज अ यूटिलिटी, जिस एक्सटेंड के लिए उसे एक्सटेसिंग यूज के लिए डिजाइन किया था वो यूसेज नहीं बचा। अब इट इज वर्क लाइक अ वन गैरेज ओनली। ओके, सो the manufacturing building in case of the is a classic example of the super adequate structure, and there is a super adequate feature no longer been effectively used by the appellant, nor would be a buyer of the property be like to need and pay for these features। So due to the demand of the turbine declines, इस प्रॉपर्टी को कोई खरीदने वाला नहीं था, या ऑनर के लिए भी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी। सो बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल यूज फॉर विच प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड हैज बीन अबॉन्डेड बाय द टैक्स पेयर, जो यूज के लिए बनाई थी वो अब यूज नहीं कर रहा है, एंड कमीशन फाउंड दैट प्रॉपर्टी वॉज अफेक्टेड बाय द सब्सटेंशियल ऑब्सोलेशंस। ड्यू टू द रिडक्शंस ऑफ द डिमांड, property is suffering by the obsolescence or के एक्सटर्नल ऑब्सोलेशंस। सही है? तो कुछ कंट्री में क्या होता है कि आपका जो टैक्स पेमेंट्स है इट इज अ लिंक विद द मार्केट वैल्यू या वैल्यू ऑफ द एसेट। तो कोई एसएससी आया होगा, उसने देखा भाई इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो इसकी वैल्यू ये होगी और टैक्स पेयर को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स बिल देख के पेयर बोला भाई मेरी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो सही है बट इट हैज अ लॉस इज यूटिलिटी, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, ना तो मैं यूज करने वाला हूँ या बाजार में कोई इसको खरीदने वाला या इसको पैसा पे करने वाला भी कोई नहीं है, तो इसकी वैल्यू ड्यू टू द एक्सटर्नल ऑब्सोलेशन ड्रास्टिकली डिमिस्ड हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है, और उसकी कम वैल्यू रहेगी ड्यू टू द ऑब्सोलेशंस। तो वेस्टिंग्स हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशंस आपका केस स्टडीज है रिलेटेड टू द ऑब्सोलेशंस। सही है? देन आपका जो होलैंड वर्सेस हॉक्शन का केस है, इट रिलेटेड टू द फिक्सचर। ये बहुत पुराना केस है,
आज की डेट में फिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीवन? फिक्सचर्स का मतलब which is fixed permanently to the wall, which ओके cannot be easily removed. ओके Suppose air conditioner hai, that so is fixed in the house. asset which is attached with the real estate, asset with the attached with the real estate and which make value addition to real estate is called the fixtures. ओके जो एसेट रियल एस्टेट के साथ अटैच कर रही है और वो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ाती है, इट्स कॉल्ड द फिक्सचर्स. अब यहाँ पे द फिक्सचर इज थिंग once chattel which has become a in a law land through the having a fixed land. The question whether a chattel has become a fixture depend upon whether it has been fixed to the land and if so for what purpose. If the chattel is actually fixed to the land and any extent by mean other than its own weight, then prima facie it is a fixture. Okay, and the burden of proof upon one whose arrest that is not, if it is not otherwise fixed but kept in a position by its own weight, then prima facie it is a not a fixture, and the burden of proof is on anyone who arrests that. बरोबर? मतलब अगर उस चैटल को लैंड के साथ फिक्स किया गया है देन इज कंसिडर एज अ फिक्सचर. अगर चैटल रखी गई है एंड बाय इट्स वेट लैंड पे वो खड़ी है तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ फिक्सचर. So Fixture. the test whether chattel is which has been some extent fixed to the land is a fixture is whether has been fixed with intention that shall remain in position permanently or for a definite or substantial period. सही है? तो अगर उसे परमानेंटली अटैच कर दिया गया है देन इट इज कंसिडर एज अ फिक्सचर. इफ इट इज बाय वेट उस पे रखा गया है देन नॉट कंसिडर एज अ फिक्सचर्स. Okay, so हॉलैंड वर्सेस फोक्सन इज रिलेटेड टू द फिक्सचर. तो ये 6 स्टडीज आपको याद रखना है. Deccan Industries related to the plant and machinery considered as immovable properties. Westinghouse Electrical House considered for the obsolescence. Sipur Paper Mill, plant and machinery not considered as immovable properties. Official liquidator, plant and machinery considered as immovable, but you have to check case to case basis. Simon Holding, valuation of by cost approach of specialized plant and machinery is subject to the potential profitabilities. 6 केस का नाम और उसका जजमेंट, मतलब 12 लाइन आपको याद रखनी है. Those who are appearing for the exam. So, बोलिए. तो जो फिक्सर बोल रहे हैं ना, सपोज इट इज फिक्स्ड टू द लैंड permanently, it is called fixer. Suppose it is not fixed to the land, only it is kept on the floor, on its self weight. What is it called? Is it fitting or what is it called? It is not fixture. Fixture. No, it is not fixer, but what it is called? So it is a just chattel. मतलब it is a classification of the fixture के जजमेंट में ये है कि भाई चैटल जो लैंड के साथ अटैच है उसे फिक्सर बोला जाएगा. चैटल विच इज नॉट अटैच विद द लैंड उसे फिक्सर नहीं बोला जाएगा. इट इज अ चैटल. सही है? तो ऐसे केसेस आते थे. मतलब देखिए एक जो अभी वी हैव डिस्कस यस्टरडे, इंटरनल रोड ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस कंसीडर एज ए प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग. कौन सा सर? Internal road of the factory premises consider as a plant machinery or a land building. बिल्डिंग. सही है? अब आप कैसे बोल सकते हो ये बिल्डिंग है? सही है? सो वंस अपॉन ए टाइम अमूल डेयरी जो है they consider internal road of the dairy premises as plant and machinery.
ये कोर्ट केस में गया और केस ने जजमेंट दिया कि भाई इंटरनल रोड ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइस इज नॉट कंसिडर एज अ प्लांट एंड मशीनरी, इट इज कंसिडर एज अ लैंड एंड बिल्डिंग। सही है। ओके सर। So many case studies are available, court judgment are available that we have to study. Some of these judgments are part of your syllabus, and many or other judgment are also available for the classifications or related to the plant and machineries. In the exam, only these 6 cases will be given. Exam is limited up to your syllabus. Okay, sir. Yeah. किसी को कोई questions? Yeah, we can go for the next chapter. Okay. Yeah. किसी को कुछ question पूछना हो तो? Impairment of the asset, Indian Accounting Standard 36। अभी स्टैंडर्ड्स के जो नंबर्स कुछ इम्प्रूव हुए हैं, दैट इज, बट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इट इज फॉर द ऑल टाइप ऑफ एसेट, मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ द एसेट। सो इसमें से जो हमारे काम का है उतना ही वी आर डिस्कसिंग। सो पहले एक तो डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है। एनीवन? इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? Recoverable cost minus this book value. कैरिंग अमाउंट एक्सीड द Yeah. इन, सही है। सो अभी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? Blank. ब्लैंक आ रहा है। Blank. हाँ। What do you mean by the carrying amount? Amount appearing in The the value in the books. Okay, amount appearing in the books. books of account. मतलब Books it is a historical cost minus accumulated. Okay. Now carrying amount is 10,000. We have to compare this carrying amount with a recoverable amount. What is the recoverable amount? Fair value minus this, Higher cost of cost of sale. fair value less cost to sell. What do you mean by the fair value? Is the value which is acceptable by both the buyer and seller at arm's length. That means mutual. It is a market value definition. Fair value market definition है amount of price that received at the time of sale of the asset or a transfer of the liabilities between the market participants, orderly transactions at measured date. सही है। किसी एसेट को मार्केट में सेल करोगे तो कितना पैसा मिलेगा। सही है। दूसरी है वैल्यू इन यूज। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? By using the asset, how much we getting Okay, benefit. so it is a conversion of the present value of a future anticipated benefits. मशीन को अगर हम सेल नहीं करते और यूज करते तो उससे कितना पैसा हम कमाते, प्रेजेंट वैल्यू। सही है। तो एक चीज क्या है, अगर हम मशीन को बेच देते तो कितना पैसा मिलता है, फेयर वैल्यू, अमाउंट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ द सेल। दूसरा, अगर हम उसे सेल नहीं करते और यूज करते, प्रोडक्शन निकालते, तो एसेट जितने भी बैलेंस पीरियड तक यूज होती और जो बेनिफिट मिलता उसका प्रेजेंट वैल्यू, इट इज अ वैल्यू यूज। सो लेट एज्यूम कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू टू सेल है, इट इज रुपीज
8,000 है, और ये वैल्यू इन यूज आएगी, इट इज अ 7,000। तब बताइए रिसीवेबल अमाउंट क्या बनेगी, रिकवरेबल अमाउंट क्या बनेगी? 8,000. 8,000। ये तो है। सही है, हायर ऑफ, ये दोनों में से जो ज्यादा होगा इट इज अ, अच्छा अच्छा ओके। सही है, हायर ऑफ। तो रिकवरेबल अमाउंट अब मिल गई, कैरिंग अमाउंट है 10,000, रिकवरेबल अमाउंट है 8,000। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या रहेगा, है कि नहीं पहले तक? 2,000. होगा सर। 2,000. 2,000. 2000। ये इम्पेयरमेंट लॉस है। कैसे पता चला इम्पेयरमेंट लॉस है वो? Carrying amount is कैरिंग greater अमाउंट than माइनस रिकवरी recoverable अमाउंट। amount. कैरिंग अमाउंट एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट। कितनी एक्सीड है? तो 10,000 माइनस 2,000, सॉरी 8,000, ये सो तो है। 2,000 रुपीज, इट इज अ इम्पेयरमेंट लॉस। और बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्दर कैरिंग अमाउंट में से आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी डिडक्ट किया जाएगा, एंड इट विल बी अ बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कैरिंग अमाउंट है वो 8,000 पे नोट डाउन होगी। ओके, एनी डाउट किसी को भी? सर प्रैक्टिकली ये सब कब काम आते हैं सर? when you are ये appointed to find out the impairment test। सर वो किस टाइम काम आएगा सर? मैं तो आज तक कभी सुना हाँ, नहीं सर। नहीं किया है वो बात सही है। लेकिन सर जनरल इन जनरल सर जैसे पूछ रहा इन हूँ जनरल एक। सारी कंपनियां 3 साल में या 5 साल में एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट करवाती है अपनी एसेट का, तब अंडर अच्छा द आरबीआई कंपनी मैंडेटरी सर? करवाती है। अच्छा सही सर। है। तो कैसे कंडीशंस में करवाती है, दैट वी विल लुक इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके सर। सही है, कब कंपनियां ऐसे इम्पेयरमेंट टेस्ट करवाती है। ओके, ओके सर। या बट इम्पेयरमेंट लॉस समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? ओके, सो कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो उसमें पहले आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, स्कोप क्या इंक्लूड है क्या नॉट इंक्लूड है, फिर आएगी डेफिनेशंस। ओके, सो कैरिंग अमाउंट हमने जो पढ़ा वही है, अमाउंट विच इज एसेस्ड रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। कैश जनरेटिंग यूनिट्स, smallest identifiable group of the asset that generate the cash flow, मतलब हमारी सारी प्रोडक्टिव एसेट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब कॉस्ट, एसेट को सेल करने के लिए जो भी खर्चा होगा, इट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। एसेट को सेल करने के लिए जो भी खर्चा आएगा इट इज अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएबल अमाउंट वी हैव, डेप्रिसिएशन भी हमने पढ़ा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो भी पढ़ा, इम्पेयरमेंट वो भी हमने पढ़ा है, रिकवर अमाउंट वो भी पढ़ा है, यूजफुल लाइफ वो भी पढ़ा है हमने। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब कुछ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ा है। सही है। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। सो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन में बाय द इंटरनल पैरामीटर्स और एक्सटर्नल सोर्सेस। कंपनी को कब ऐसा लगता है कि एसेट में लूज इज वैल्यू? तो भाई during the period asset market value has declined significantly more than would be accepted as a result of passage of time or normal use। जब एसेट की मार्केट वैल्यू ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द एनी रीजन, तब इम्पेयरमेंट लॉ टेस्ट किया जाता है। ओके, या significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period or will take in a newer feature in the technological, market, economical or legal environment in which entity operates or market to which asset is dedicated। अगर कोई ऐसे इकोनॉमिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस या मार्केट चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं ऐसा कंपनी को लगता है, तब कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है।
फिर the market interest rate or other market rate return on investment have increased during the period. जब कंपनी को लगता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न्स है वो हमें मिल रहे हैं, मतलब एसेट यूज करने से जो मिल रहा है हमारा, उससे अदर इन्वेस्टमेंट्स गिविंग अ गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ऐसी कंडीशंस में कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है. ओके. Current carrying amount of our asset entity more than its market capitalizations. Okay? कंपनी का जो कैरिंग अमाउंट है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, तब कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है. ओके. फिर कुछ इंटरनल रिसोर्सेस के बेसिस पे एविडेंस अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज ऑफ द एसेट. अगर एसेट ऑब्सोलेंस हो गई है या फिजिकली डैमेज हो गई है, तब इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है कंपनी. Significant changes with the adverse effect of the entity have taken place during, accepted to take place near future extent which manner asset is used or expected. अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि एसेट का जो हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, उस एफिशिएंसी पे हम अगले सालों में ड्यू टू द चेंज इन द प्रोडक्ट डिमांड, ड्यू टू द प्रोडक्ट साइकिल, ड्यू टू द कंपटीशन, हम उस रेट से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, ऐसे सिनारियो में इम्पेयरमेंट टेस्ट करवाती है. एविडेंस ऑफ अवेलेबल इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस द एसेट इज विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड. जब कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो खराब है या खराब हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है. सही है. तो एक्चुअली जब कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवाती है तो उसकी कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो जाती है. और कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो जाती है इसका मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है. और जब डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. और जब कंपनी का नेट नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. और टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा सकती है ऐसे सिनारियोज में. ओके. अगर ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट डू नॉट स्टडी एंटायर स्टैंडर्ड्स. हमारा जो जितना काम का है उतना ही तक पढ़िए. सही है. Yes. सर एक डाउट है सर. हाँ बोलिए. ये कंपनी जो है इम्पेयरमेंट लॉस जो उसको स्टडी करके उसको अल्टीमेटली उनको सर बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या माइनस करेगा वो सर जो लॉस बुक्स जो ऑफ है? अकाउंट में उसकी जो कंपनी की मैं वही बोला, कंपनी की कैरिंग, अगर एसेट इज सफरिंग बाय द इम्पेयरमेंट लॉस, सही है, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी कैरिंग अमाउंट घटा देगी, मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ा देगी. और तो डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन बढ़ेगा आवर तो रिपोर्ट सर, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड अ ऑन बेस्ड ऑन आवर रिपोर्ट. आवर रिपोर्ट. अच्छा सर. हाँ सही है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बोला है कि एसेट इज सफरिंग बाय द इम्पेयरमेंट एंड दिस मच इज इम्पेयरमेंट लॉस, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगी. ओके. तो उसकी तो कैरिंग सर अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन तो, बढ़ जाएगा. सही है. तो टैक्स कम हो जाएगा सर, टैक्स जो है टैक्स उनका कम हो बेनिफिट मिल जाएगा. जाएगा. हाँ, तो यही गेम है ना. कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे मेरी इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होने वाली है, तो वो आज से वो पैसा बचा लेती है. अच्छा सर. सही है. कि इसमें कोई डाउट, जो प्रोसीजर बोली है वो लिखी है वैसे ही, बट अप टू द डेफिनेशंस और ये इम्पेयरमेंट कैसे मेजर किया जाता है तब तक का ही हमारे वैल्यूएशंस ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी के लिए अवेलेबल है. सही है. देन
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 166 दैट इज रिलेटेड टू द लीज। हमने जो लीज चैप्टर में पढ़ा था वही सब यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है। ओके, कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो स्कोप ऑफ वर्क, ऑब्जेक्टिव, देन सारी डेफिनेशन। लेसर, लेसी क्या है? लिस्टम, रिकॉग्नाइजेशंस, ये नया है। एक मिनट में पूरा ना खोलता हूँ, ये ऊपर का थोड़ा इसका दिया है 17 आई थिंक सो। ओके, अवेलेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीज। हेलो, Yes, sir. बड़ा कीजिए सर। तो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द लीज जो हमने पढ़ा वही। इट इज एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर कन्वे लेसी टू लीज इन टर्म ऑफ द पेमेंट्स और सीरीज ऑफ पेमेंट राइट टू यूज। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, नॉन कैंसलेबल लीज। ओके, उस टाइम क्वेश्चन था कि लीज कब कैंसल हो सकती है। ओके, इज अ नॉन कैंसलेबल लीज कैन बी कैंसलेबल ओनली फर्स्ट upon the occurrence of some remote contingency with a permission of the lessor. If lessee enter into new lease for the same or equivalent asset for the same with the same lessor. Okay? एक लीज चल रही है, उसी लीज को टर्मिनेट करके सेम लेसर के साथ नई लीज एग्रीमेंट में हो जाती है तो पुरानी लीज कैंसिल हो सकती है। Upon the payment by the lessee such a additional amount that inception of the lease continuous हो। अगर लेसी पूरा पैसा चुका देता है लेसर को तो लीज कैंसिल हो सकती है। ओके, और अपॉन द अक्रंस ऑफ, अगर लेसी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेता है और या लेसी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में लेसी इज नॉट लायबल टू पे द लीज रेंट, लीज कैंसिल हो सकती है। सही है। इंसेप्शन ऑफ द लीज, लीज कब से स्टार्ट होगी? सो इट इज, सर एक डाउट हाँ बोलिए। सर, जैसे कि कोई अकाउंट से एनपी हो जाता है सर, तो एनपीए नहीं, जो एनपीए इज अ डिफर्ड देन इंसॉल्वेंट। दैट्स ट्रू सर, लेकिन मेरा डाउट ये था सर कि अगर मैं फैक्ट्री बना हूँ सर, मैं जो रेंट पर ले आऊँ, मैं जो इंस्टॉलमेंट हो जाता हूँ सर, तो मुझे जो है उस दिन से, जिस दिन से इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ और डिक्लेयर किया गया है, उस दिन से मैं जो है जिसको मैं लीज पेमेंट देना लीज था रेंट उसको। देने से मुझे कंसेशन मिलेगा। हाँ वही है सर, हम्म, सही है। मिलेगा। ऐसे ऐसे ओके, ऑप्शन। देखिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए यू हैव टू गो विद द इंसॉल्वेंसी लॉ के अकॉर्डिंग में आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल टू पे माय फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कोर्ट सारे कंडीशंस एसेस करेगी, देन ही विल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अगर कोर्ट डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंट, देन उसके बाद में सारे जो फाइनेंशियल रीपेमेंट्स करने थे वो सीज हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। सही है। ओके सर। इंसॉल्वेंट बनने से और अदर डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। तो इंसेप्शन ऑफ द लीज, इट इज अर्लियर डेट लीज एग्रीमेंट एंड द डेट कमिटमेंट बाय द पार्टी टू प्रोविजनल ऑफ द लीज। तो ये लीज क्लासिफाइड आइदर एज ए ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। In case finance lease, the amount recognitions at the commencement of the
लीज टर्म्स, मतलब कब लीज एंटर हुए। पोजीशन में भी डिफर हो सकता है। कमेंसमेंट ऑफ द लीज, it is a date from which lessee is entitled to exercise right to use। लीज एग्रीमेंट मैंने 10 तारीख को बना दिया तो इज इंसेशन ऑफ द लीज पीरियड। ओके, इंसेप्शन ऑफ द लीज। कमेंसमेंट ऑफ द लीज कब स्टार्ट होगी भाई? 10 तारीख को लेसी के हाथ में राइट टू यूज ऑफ द प्रॉपर्टी हुई, सो कमेंसमेंट ऑफ द लीज विल बी फ्रॉम द 10th तारीख। लीज टर्म्स, it is a mutual understanding, minimum lease payments, so lessor and lessee, सारी definition, economic life, useful life, again guaranteed residual value। Okay, now what do you mean by the guaranteed residual value? So guaranteed end of the lease period, what will be a value of the asset that may be a given by the, for the lessee, part of the residual value that is guaranteed by the lessee or third party related to the lessee। लेसी ने अथवा और या थर्ड पार्टी रिलेटेड टू द लेसी ने बोला है कि दिस मच विल बी अ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इफ इट इज नॉट अचीव्ड देन एडिशनली आई विल पे। फॉर द लेसर, part of residual value that is guaranteed by the lessee or by the third party unrelated to the lessor, that is a financial capable of discharging the obligation under the guarantee, guaranteed by the lessee or any unrelevant party than the lessor, which is financially capable for the obligations। Same, unguaranteed residual value, initial direct cost, लीज एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए उससे पहले जो भी खर्चे होते हैं, दैट मे बी अ टूल एंड ट्रैवल्स, अटर्नी कॉस्ट, लॉयर कॉस्ट या नोटरी, वो सारे कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट टू द लीज बोले जाते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन अ लीज, सो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस जो इनिशियल कॉस्ट है वो दोनों मिलके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ द लीज बनते हैं। Net investment of the lease, it is a gross investment of the lease discounted at a interest rate implicit in the lease। So जो भी पेमेंट मिलने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है यूजिंग द इंटरेस्ट रेट। Classification criteria for the lease, okay, it is classified as a financial lease or a operating lease। So when it is called as a financial lease, the lease transfer ownership of the asset lessee by end of the lease, it is classified as a financial lease। The lease has option to purchase the asset at price accepted to be significant lower than the fair value। लीज में है कि by end of the lease period you have purchase option which is less than the fair value, it will be a classified as a financial lease। Lease term is a major part of the economic life of the asset, it will be classified as a financial lease। At inception of the lease, the present value of minimum lease payment is substantial fair value of the lease asset। अगर minimum present value of the minimum lease payment is almost equal to the fair value of the asset, it will be classified as a finance lease। Lease asset in a specialized nature that as only lease can be made without the modification। So these are the 5 criteria where your lease will be a classified as a finance lease। Okay. Same accounting treatment of the lessee for the finance lease बताइए anyone? फाइनेंस लीज में लेसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा?
डिप्रिशिएशन उसका रिपोर्ट में जाएगा। और ओके, सो पहला रेंट रेंट लेसी में लीज एसेट एंड लायबिलिटी इन देयर बैलेंस शीट। फिर जो भी ईएमआई मतलब जो भी पेमेंट देगा, it will be a appropriate recognitions between the finance charge and reduction in the liabilities. Okay. Minimum lease payment are appropriate between the finance charge and reduction in the outstanding liabilities. और लेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा। द डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर लिस्ट एसेट 3 चीजें हैं फॉर द लेसी फाइनेंशियल लीज। सेम लेसी ऑपरेटिंग लीज में कैसे करेगा? एक्सपेंसेस में दिखाएगा वो जो लीज का पेमेंट है, एक्सपेंसेस में दिखाएगा। ओके, तो इन फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज में लेसी इट विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। सेम फॉर द लेसर फाइनेंस लीज में कैसे ट्रीट करेगा? तो इनकम आएगा, जो रेंट आएगा उसे उसका हाँ, इनकम कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? एज अ रिसीवेबल। रिसीवेबल। फिर जो पेमेंट मिलेगा उसे कैसे ट्रीट करेगा? जो भी लीज रेंट मिलेगा उसे कैसे ट्रीट करेगा? The recognition finance income shall be based on the pattern के constant periodic rate of returns on the lesser's net investment in a finance lease. सही है, जो भी पैसा मिला it is a consider as a rate of return on his net investment. Okay, ऑपरेटिंग लीज में कैसे डील करेगा? ऑपरेटिंग लीज में लेसर कैसे ट्रीट करेगा? रेंट रेंट जो मिल रहा है, रेंट जो मिलेगा it वो will be इनकम recognized as a income on state line basis. अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। सही है। सो दिस अप टू द, यहाँ पे आप सारी डेफिनेशंस एक बार देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑल द डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड, बट पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम standard 16 property plant and equipments. So can we have some break, sir, for 10 minutes? Okay. Okay. It is 45. Okay. 55 को अगेन मिलते हैं हम। बंसल जी 5 मिनट कर लीजिए, 5 बजे मिलते हैं, 4 बजे मिलते हैं सर। सर सर मिलने हमको को तो रात को 10 सिलेबस बजे भी भी मिल खत्म सकते हैं, मिलने को तो रात को 10 बजे भी मिल सकते हैं, पर सेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। अच्छा ठीक दैट है, इज अ प्रॉब्लम। मतलब सॉरी। अगर वो 6 बजे के बाद 6:30 बजे बजेंगे और कुछ नहीं। हाँ, उतना ही लेट होता चला जाएगा। नहीं 5 सर 40-50 10 मिनट के लिए जाते हैं हम। इट इज 45 55 को 10 मिनट के बाद रिज्वाइन करेंगे। यस यस राइट सर। सो फ्रेंड्स, टिल देन यू कैन स्विच ऑफ योर स्क्रीन्स। ये 16 स्टैंडर्ड्स वॉट एवर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वही सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है। सो इसमें इनिशियली रिकॉग्नाइजेशन है इनिशियल कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंशियल कॉस्ट, देन मेजरमेंट एट द रिकॉग्नाइजेशन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या रहेगा और कॉस्ट मेजरमेंट क्या रहेगा, एंड मेजरमेंट आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन, cost mode, revaluations, depreciation, depreciable amount, depreciation PDR method, impairments, जो whatever we have discussed.
तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है कि भाई पहले रिकॉग्नाइजेशन होता है कि इनिशियल कॉस्ट क्या रहती है एंड सब्सिक्वेंशियल कॉस्ट क्या है। फिर कोई भी एसेट एज अ रिकॉग्नाइज एसेट तो उसके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या रहते हैं। एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट उसपे जो डेप्रिसिएशन प्रोसीजर होती है ईयर ऑन ईयर, दैट इज एंड एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट आर डी recognized in the books of account. तो अगेन स्कोप क्या इन्वॉल्व है क्या नहीं इन्वॉल्व है। What you mean by the property, plant and equipment? So it is a tangible items, okay, Cassie, that are hold for use in the production or supply of goods and services for rental to other or for administration purpose. अगर कोई भी tangible assets for the productions and supply of goods or services के लिए rental purpose के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होती है, देन इट इज क्लासिफाइड एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर एक्सेप्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 पीरियड। अगर वो लेस देन 1 पीरियड के लिए यूज होने वाली है देन इट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट्स। देन कैरिंग अमाउंट वी डिस्कस्ड, कॉस्ट वी हैव डिस्कस्ड, depreciable amount, depreciation, entity specific value. Okay, entity specific value or say investment value. It is a present value of cash flow entity except to be arised from the continuous use of the asset and from the disposal end of the useful life. Yeah, we can say value to buyer. फ्यूचर में उसे जो भी पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जो भी स्क्रैप डिस्पोज करेगा, एडिशन ऑफ दैट इट्स अ एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। फेयर वैल्यू वी हैव डिस्कस्ड, इम्पेयरमेंट लॉस वी हैव डिस्कस, रिकवर अमाउंट, ये सारी डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली है। So whatever we have discussed during the yesterday or today, lease या valuation procedure, वो सारी as per the accounting standard ही discuss की थी, which is part of the syllabus also. Okay, so recognition in books of account, asset कब recognize होती है तो future economic benefit will flow to the entity अगर एंटिटी को फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने वाला है एंड इसकी कॉस्ट मेजर्ड लायबली। अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉस्ट एज एन एसेट किया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन इनिशियल कॉस्ट, एनीवन इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगी? Acquisition cost. सॉरी, Purchase cost. Sorry, that is the time of procurement. That is the cost. सही है। तो इनिशियल कॉस्ट रहेगी भाई, आपको प्लांट मशीनरी ऐसे भी एसेट खरीदने पड़ेंगे विच विल नॉट जनरेट द एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट इट इज अ मैंडेटरी फॉर द ड्राइविंग अ प्लांट। जस्ट लाइक chemical manufacturers still have a few chemical handling process to comply with the environmental requirements, या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे विच इज नॉट जनरेट द एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, बट अगर वो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स या पॉल्यूशन कंट्रोल्स डिवाइसेस या इक्विपमेंट नहीं लगाओगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं लगाओगे, तो यू आर नॉट गेटिंग अ परमिशन टू रन अ प्लांट। तो दिस आर क्लासिफाइड एज इनिशियल कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या रहेगी भाई? एसेट का जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे डे टू डे बेसिस पे, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग करोगे डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसके स्पेयर पार्ट जो रिप्लेस करोगे, दैट इज क्लासिफाइड एज अ सब्सिक्वेंशियल कॉस्ट।
मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए डिसाइड हो गया कि ये एसेट की कॉस्ट, एसेट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट आर मेजर्ड रिलायबली, तो अब इसकी मेजरमेंट होगी। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में? जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है या बुक ग्रॉस ब्लॉक होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? सो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिकवेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट और रिबेटेबल। मतलब डिस्काउंट या रिबेट आपका कॉस्ट एलिमेंट नहीं रहेगा। सही है। सो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी और जो अनरिकवेबल टैक्सेस पे किए हैं, इट इज एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। आज बहुत सारे मशीनरी परचेज करने के बाद जीएसटी वापस मिल जाता है, तो इट इज अ रिफंडेबल टैक्सेस। तो रिफंडेबल टैक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए पार्ट ऑफ द एसेट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की जाएंगे। ओके, देन any directly attribute bring to the asset to the location and conditions necessary for it to capable operating in a manner intended by the manager। एसेट परचेज करने के बाद उसे नेसेसरी सर्विसेबल कंडीशंस में रखने के लिए जो भी खर्चा होता है, इट इज अ एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। मतलब इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग का जो भी खर्चा रहेगा, इट इज अ element of the cost for the asset। थर्ड क्या है? The initially estimated cost of the dismantling or removing items and restoring of the site on which it is located, the obligation for entity incurred either item is required। तो साइट प्रिपरेशन करने के लिए जो भी खर्चा रहेगा, पहले साइट पे कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे नहीं होंगे, तो साइट प्रिपरेशन करने के लिए जो भी खर्चा रहेगा, इट विल बी अ एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। ओके, सो परचेज प्राइस, directly attributed cost, initial estimated cost for the dismantling and removing item and restored। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द पीपी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट, इरेक्शन कमीशनिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, थर्ड पार्टी प्रोफेशनल फीस जो भी किया होगा, कॉस्ट ऑफ द टेस्टिंग वेदर एसेट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट मतलब कमीशनिंग कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट आपके कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ एलिमेंट कौन नहीं रहेंगे? ओके, या कॉस्ट ऑफ एलिमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? सही है। तो cost of conducting business in a new locations or with a new class of customers. This cost will be a not part of the cost of element for asset. Cost incurred in an introduction of new product or services. Cost of opening a new facilities. Administration and other general overhead cost. ये चार cost will be a not part of the element of the cost या हिस्टोरिकल कॉस्ट या ग्रॉस ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। ये कॉस्ट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट एज ए पार्ट ऑफ द एसेट रिकॉग्नाइज या ट्रीट नहीं की जाएगी। कीप इन द माइंड क्या होगा एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट या क्या नहीं रहेगा एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। सही है। सो देन अगेन ऑल द डिस्क्रिप्शंस, मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट आफ्टर मेजरमेंट। हाँ बोलिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्यों नहीं रहेगा? सॉरी, द कॉस्ट administrative and other general overhead costs, हाँ they are part of they can be treated as part of the production team also in one view because they will be देखिए सिंपली मैं समझाता हूँ। वॉट एवर द एक्सपेंसेस मेड
only and only for the purchase of the asset and erection commissioning cost, it will be treated as a cost of the asset. All other general overhead cost or administration cost will be a not cost of the asset. सही है। मैं मेरे घर में एसी लगवाने के लिए 2-4 जगह घूमता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द परचेजिंग एसी, तो वो कॉस्ट मेरे एसी में आएगी। बट मैं घूमता हूँ एसी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, रिपेयर करने के लिए, या मेरे कुछ 2-4 काम करने के लिए, तो ये जो जनरल कॉस्ट हो गई, इट विल बी अ नॉट कॉस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, मैं यहाँ से इंग्लैंड जाता हूँ फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन बिफोर डिलीवरी, तो ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बट मैं यहाँ से इंग्लैंड जाता हूँ, वहां मैं इंस्पेक्शन करता हूँ और 10-12 दिन घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, तो ये कॉस्ट मेरी कॉस्ट ऑफ द एसेट में नहीं आएगी। So all the exclusive cost that is incurred for the purchase of the asset and put into serviceable conditions, यही सारी cost element of the cost of the assets में आएगी। सही है? Okay. So एक बार बुक्स में ये रिकॉर्ड हो गए सारे समेशन करके ग्रॉस ब्लॉक, देन ईयर ऑन ईयर उसे डेप्रिशिएट किया जाएगा। सो आफ्टर द मेजरमेंट, मेजरमेंट आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन। सो कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस, इट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। सही है? रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब एक बार वैल्यूएशन कर दिया, दोबारा वैल्यूएशन कर दिया, तो उसकी ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दी जाएगी। सो फेयर वैल्यू एंड ऑफ द रिस्क माइनस सब्सटेंशियल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इज कैरिंग अमाउंट। तो पहले की फेयर वैल्यू है, उसमें से सब डिडक्ट किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशंस, रिवैल्यूएशंस कितने टाइम में करवाना चाहिए। सो जब भी सिग्निफिकेंट चेंज इन द फेयर वैल्यू या एवरी 3 years और 5 years में रिवैल्यूएशंस कंपनियों को करवाना चाहिए। जब भी पता चले कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फेयर वैल्यू, तब करवाना चाहिए, या एट एवरी एंड ऑफ द 3 years और 5 years रिवैल्यूएशंस कंपनी को करवाने चाहिए। मगर कोई कराता नहीं सर, कोई भी नहीं कराता है सर। सॉरी कोई ऐसे ही कराता नहीं सर, एक्सेप्ट सम सर, करवाते हैं बट जब जरूरत पड़ती है तब। बट एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शंस एवरी 3 years करना चाहिए ना सर। हाँ सर, एवरी 3 और 5 years में तो बहुत सारी कंपनी करवाती है रिवैल्यूएशंस। सर सही है यार, कई सर बार क्या होता है, वैल्यूएशंस करवाते हैं फॉर अनदर पर्पस और उसी को कंसिडर करते हैं फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। मतलब एक ही वैल्यूअर से 2-3 पर्पस के लिए अलग अलग टाइप से करवा देते हैं। लेकिन सर मैं आई ऑब्जर्व सर सम फॉरेन बैंकर्स दे आर डूइंग इट रेगुलरली फॉर एवरी 3 years सर। हाँ, मतलब दोज अगर फंडिंग पड़ी है तो एवरी 3 years करवाते हैं वो लोग, बट कंपनी अपने आप खुद नहीं करवाती। जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तब करवाती है वो। तो ये वैसे ही इम्पेयरमेंट लॉस में भी बोला गया है कि एंड ऑफ द एवरी ईयर्स यू हैव टू मेक द टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट्स और एवरी 3 years यू हैव टू अपॉइंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, बट देन ऑल्सो। ओके, तो ये जो रिवैल्यूएशंस करवाते हैं उसे ट्रीट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, वैल्यू इंक्रीज हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरिंग अमाउंट आए थे 100 रुपया और वैल्यूएशन ने फेयर वैल्यू निकाल कर दी 120 रुपया। तो जो 20 रुपया है, इट विल बी रिकॉग्नाइज एज ए
other compressive income as a revaluation surplus. 20 rupees will be a other compressive income as a revaluation surplus. कैरिंग अमाउंट 100 रुपया थी और फेयर वैल्यू आई 80 रुपया, डिक्रीज हो गई, तो भाई इट विल बी एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 रुपीज लॉस ट्रीट किया जाएगा। सही है। दोबारा वैल्यूएशन कराया, दोबारा इंक्रीज हुई, तो अगेन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस। दोबारा करवाया, डिक्रीज हो गई, तो जो पहले जो रिवैल्यूएशन सरप्लस थे उसमें से वो डिडक्ट किया जाए, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिप्लस एक्सटेंड अवेलेबल, और बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ 20 रुपया थे, ओके, और डिक्रीज वैल्यू 30 रुपीज, तो 20 रुपया पहले यहाँ से डिडक्ट किए जाएंगे और बाकी के 10 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट किए जाएंगे। सेम सब्सिक्वेंसली आगे होता है, तो पहले अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़े हैं तो उसे डिडक्ट किया जाएगा, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट किया जाएगा। डिक्रीज तो डायरेक्टली चेंज इन द लेस इन प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन कौन कौन सी मेथड से होता है डेप्रिसिएशन? सिंपल SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, SLM मेथड एंड UOP. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सही है। रेसिडुअल वैल्यू, क्या लिमिटेशन है रेसिडुअल वैल्यू में? 5% maximum. 5% maximum. 5% maximum. If you are taking a residual value more than 5%, you have to give the support. Justification. सही है। Commencement of the depreciation. Depreciation कब चार्ज होता है? When asset is put when into it is use available for at use. the end of the year. नहीं, I mean, depreciation of asset begun when it is available for use. use. Cessation of depreciation कब होता है? cessation, डेप्रिसिएशन कब बंद हो जाता है? Stop use of machine. ओके, When जब depreciable amount asset is already is recovered, नहीं, asset is derecognized. derecognized. Okay. Yes. Now it is not having any useful life. Yeah, asset is classified here for the sale. मतलब एसेट को निकाल के सोल्ड करने के लिए रख देते हैं, तब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो सीज हो जाता है। ओके, डेप्रिसिएशन मेथड में इट इज, हमने बोला वो 3 डेप्रिसिएशन मेथड से ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, dismissing balance method or say WDV method, and unit of productions method. सही है। इम्पेयरमेंट अगेन जो हमने डिस्कस किया 36 इंडियन एक्ट में, एंड डी रिकॉग्नाइजेशन कब होता है? ऑन डिस्पोजल, या जब एसेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बचते। सो दिस इज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। एसेट रिकॉग्नाइज कब होती है? एसेट रिकॉग्नाइज होने के बाद कॉस्ट कैसे मेजर की जाती है? कॉस्ट मेजर करने के बाद क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? एंड लास्टली डी रिकॉग्नाइज कब होती है या कैसे होती है? ओके, तो कैसे होती है डी रिकॉग्नाइज एसेट? 2 कंडीशन में। एक एसेट इकोनॉमिकल लाइफ पूरा सेल कंडीशन, नहीं, वो सब सही है। एक एसेट डिस्पोज कर दी जाती है, मतलब लाइफ बाइफ कुछ नहीं, एसेट को निकाल के डिस्पोज कर दिया है, वर्केबल है नॉन वर्केबल कुछ नहीं। सही है। दूसरा कब? उसका मतलब उससे क्या वही इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं रहेगा? हाँ, इफ देयर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द एसेट, देन इट इज अ डी रिकॉग्नाइजेशन। एसेट रिकॉग्नाइज कब होती है?
जब उसको यूज में लेंगे, Economic value. when we put नहीं, it into जब use. there is a economic benefit available from the asset and available for use more than one period, cost can be measured. Recognize a cost as an asset. सही है. Derecognize कब होगी? When there is a no economic benefits available. सही है. ओके, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो वी कैन डिस्कस. कुछ नहीं. वो अभी क्या लग वो क्वेश्चन पेपर एक खोला था, देख लेते हैं. सैंपल कुछ था. हाँ सर. यस यस, यस. ये सैंपल है बट ओके. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आते. हम्म. हम्म. Okay. Who one of the following contact between the owner of equipment and who is a use of the equipment? तो कौन बोलेगा who is the owner of the equipment and who has right to use of equipment? Okay, owner of the equipment and who use the equipment. तो आपकी लीज एग्रीमेंट बोलेगा. सही है. तो ये लीज एग्रीमेंट, लीज क्या है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है. सो a set of sale-made and mutually accepted terms transactions between the owner of the machine and user of the machine for agreed condition period consists with a law is known as a building lease, liability lessor, or a lease agreement. So it is called a lease agreement. Okay. Which of the following purpose of the valuation replacement cost consider as a value of the asset? Asset. इंश्योरेंस. ठीक है, इंश्योरेंस पर्पस के लिए. इंश्योरेंस में जब आप रीइंस्टेटमेंट वैल्यू फाइंड करते हो, सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज अ कंसीडर एज अ वैल्यू ऑफ द एसेट. सही है, इंश्योरेंस पर्पस के लिए. सिचुएशन व्हेन कैरिंग अमाउंट रिजल्ट हायर देन द कैश जनरेटिंग यूनिट रिकवरेबल वैल्यू इज नोन एज अ Impairment. Impairment. carrying amount is a higher than the recoverable amount. So it is called the impairment. Okay. ये अलग से है, वैल्यूएशंस के रिलेटेड है. Okay. Which of the following tasks are not covered within the scope of the valuer functions? Okay. To advise individual client or corporate firm on effective strategy for buying property. So it is an investment value. To verify revenue, it is a to conduct marketing work to make the property attract to the potential purchaser. देखिए ये काम वैल्यूअर का नहीं है, मार्केटिंग करना है. To appear in a court as an expert, it is a function of valuer. सही है. तो दिस इज ये जो हमने 2 चैप्टर पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे. सो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे. सही है. और जो मोर क्वेश्चंस है इट इज अवेलेबल इन हमारे जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं सीरीज, वहीं से मिल जाएंगे आपको. या किसी को कुछ पूछना हो तो ओके. सो दिस इज अ पर्पस Sir, ऑफ
हाँ Sir, बोलिए। one question. Sir, ये license capacity and design capacity both are same or different? नहीं नहीं, बोथ आर डिफर। Okay, okay, okay. लाइसेंस कैपेसिटी मतलब दैट इज अ कैपेसिटी गिवन बाय द एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। Okay, sir. Okay. और कई बार क्या होता है कि भाई प्लांट कैन डिजाइन एट अ 50 टन पर डे और 80 टन पर डे और 100 टन पर डे। Yes, sir. अब उसको लाइसेंस मिला है 60 टन पर डे प्रोडक्शन करने का, Okay, yes, sir. Right, sir. तो वो क्या करेगा, 80 टन पर डे का प्लांट लगाएगा। Yes, right, sir. सही है, Okay, तो लाइसेंस कैपेसिटी में मेनी टाइम डिफर, मैनी okay. टाइम रेटेड कैपेसिटी एंड मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोनाउंसिएटेड डिफर। जैसे Okay. कई बार होता है कि भाई हम कहते हैं कि 500 मेगावाट टरबाइन, Hmm. बट एक्चुअली उस टरबाइन की जो रेटेड कैपेसिटी होती है वो 520 या 525 मेगावाट होती है। ज्यादा ही हो. Okay. ओके, मैनी टाइम इज हैपन। Okay. भाई ये तो that capacity, what is the install capacity or rated capacity that we have to measure या discuss with the management, या जो मशीनरी पे है वो वहां से नोट डाउन करनी पड़ेगी। Yes. ओके, सो Okay. ये चीज पॉसिबल रहती है। Okay. या सर IBBI एग्जाम में पहले से अभी कुछ नया पैटर्न कुछ चेंज होते हैं। सॉरी, पैटर्न मतलब? मतलब क्वेश्चंस कुछ लेंथी टाइप का क्वेश्चंस, ऑप्शंस नहीं, लेंथी टाइप का आपके जो ऑप्शंस। मतलब आई थिंक सो 26 मार्क के केस स्टडीज है, और बाकी के जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस ही है, मतलब एमसीक्यू ही हाँ है। हाँ MCQ है, लेकिन पहले ऑप्शंस है ना, वो तो मतलब A B C D में है, थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस में रहते थे। अभी जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस पढ़ने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव टाइप, मतलब उसका कॉम्प्रेसिव टाइप नहीं। कॉम्प्रहेंसिव में मतलब पढ़ के चारों नहीं, मैं ऑप्शंस पढ़ समझ के। गया, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर संदीप जी के को नॉलेज में ऐसा हो कि भाई एमसीक्यू टाइप्स की जगह कंप्रेसिव लंबे लंबे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में अभी भी है कि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। राइट आंसर के लिए आपका +1 मार्क, और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 मार्क। सेम ही है सर, कुछ भी चेंज नहीं है सर। हाँ, मे प्रोबेबल कई कुछ एक दो क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस लंबे हो सकते हैं, बट अदरवाइज वो सिंगल वर्ड, डबल वर्ड या ट्रिपल वर्ड में ही होता है, उससे ज्यादा लंबा आंसर नहीं होता। ओके। ज्यादा से ज्यादा कभी हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट दिया हो आंसर के ऊपर, लेट इट बी, ऊपर कोई डेफिनेशन का नाम लिखा हो, नीचे उसकी डेफिनेशन 3-4 अलग अलग डेफिनेशन दी हो, उनमें से आपको एक चूज करना हो, बस इससे ज्यादा हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं, वो है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग केस स्टडीज। ओके, मतलब केस लो जो, यस Right. सर। Integrated steel plant like JSW, they are producing the billet from iron ore plus scrap iron or waste material scrap. They mix and they have melted and they make the billet. From billet to other like TMT bar, angle channel like that. This is the process in short way I can say. ओके, तो स्टील प्रोसेस में, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, देर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वन यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस, अनदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ओके, तो पहले क्या किया जाएगा, यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस में आपका आयरन ओर है, इट विल बी गोज टू द सिंटर प्लांट। सिंटर प्लांट में क्या होगा सर? सेंटर बनेगा, Hmm. मिक्सिंग हाँ, करके क्या फ्लक्स होता है सिंटर फ्लक्स में? आयरन ओर फ्लक्स कोल
आयरन then ओर की जो binder इम्प्यूरिटीज होगी, कार्बन इन impurity- रिड्यूस होगा सर, कार्बन हाँ, रिड्यूस करेगा। कार्बन रिडक्शन, आयरन और के जो इम्प्यूरिटीज होगी वो रिड्यूस किया जाएगा। और हाँ yes. पैलेटाइज बनने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए जो अदर केमिकल्स है वो ऐड किए जाएंगे। फिर सिंटर्स में से जाएगा पैलेटाइजेशन में। पैलेटाइज प्लांट में क्या होगा? उसमें पैलेट बनेगा सर। पैलेट सर बनेगा। सिंटर सही है। सर सिंटर एंड पैलेट दोनों सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस, बट सिंटर एंड पैलेट्स एक ही मतलब टाइप ऑफ पर्पस के लिए यूज करता है। पर्पस के लिए यूज होता है। दैट्स द रिडक्शन ऑफ द इम्प्यूरिटी एंड मेक सुटेबल, मतलब आपका आयरन और सुटेबल फॉर साइज द मेल्टिंग। आयरन साइज और को को आप, बढ़ाने। आयरन और को आप सीधा ही डाल दोगे तो मेल्ट नहीं होगा जल्दी। अदरवाइज वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस इन द एनर्जी। यस यस यस। सही है। और वो फीड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस के लिए वी रिक्वायर द कॉक। तो आपका जो कॉल है, कोयला, इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, वो ओवन में हीट किया जाता है एंड कॉल इज कन्वर्टेड इनटू द कॉक, एंड कॉक को जलाया जाता है इन अ ब्लास्ट फर्नेस। यस। Okay, and other limestone is added. Again, it is for the purifying process to remove the impurities. So once the melting process is complete, उसके नीचे जो मैनहोल होगा उसे ओपन किया जाता है। जो इम्प्यूरिटीज होगी इन फॉर्म ऑफ द स्लज ऊपर फ्लोट करती रहेगी, तो वो इम्प्यूरिटीज एज ए फॉर्म ऑफ द स्लज निकाल दिया जाता है। और जो मोल्टन आयन होता है, यूजिंग द कन्वर्टर, लेडल थ्रू कास्टिंग मशीन में जाता है। कौन? कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन्स। कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन्स में मोल्ड फिट किए होते हैं, दैट मे बी प्रोड्यूस एबल टू प्रोड्यूस स्लैब, बिलेट और द ब्लूम। कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन्स में से स्लैब, बिलेट और ब्लूम आते हैं। फर्दर स्लैब आर गोइंग फॉर द मेकिंग अ प्लेट और रोल्स। आपकी बिलेट for the making a bar, road or tube loads, and bloom say further go for the railway track or structural steels. So primarily यहाँ पे convert होता है raw material iron ore or coal into the slab, billet and bloom में। दूसरी जो process है using the electric arc furnace, or it is also known as a DRI process, direct reduction of iron। DRI, yes. DRI, direct reduction of iron process. So here आयरन और कॉल के मिक्सर को कील में डाला जाता है। okay? और कील को फायर करने के लिए वी आर सप्लाइंग द कॉल। तो मिक्सचर ऑफ द आयरन एंड कॉल इन प्रेजेंस ऑफ द फायरिंग ऑफ द कॉल, वहां पे प्रोसेस बनती है जहां पे अगेन रिडक्शन ऑफ द आयरन होता है और आउटपुट हमें इन फॉर्म ऑफ द स्पंज आयन मिलता है। स्पंज आयन गोज टू द कूलर और कूलर के बाद इट इज फीडेड टू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हाई इंटेंसिटी करंट पास होता है ड्यू टू द इंटेंसिटी। अगेन यहाँ पे मेल्टिंग होता है। अगेन वी आर एडिंग सम specialized chemicals or adaptive chemicals to remove the impurities. So once the melting process is complete, again through the ladle उसे कास्टिंग मशीन्स में लिए जाया जाता है और कास्टिंग मशीन में से स्लैब, बिलेट या ब्लूम के फॉर्म में वी आर रिसीविंग द आउटपुट्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं भाई? इन विच इंडस्ट्री ब्लास्ट फर्नेस इज यूज, इन विच इंडस्ट्री आर्क फर्नेस इज यूज, डीआरआई प्रोसेस का मतलब क्या होता है, या डीआरआई प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द विच इंडस्ट्रीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोसेस। ओके, जैसे हम कहते हैं भाई टीएमटी प्रोसेस, तो व्हाट यू मीन बाय द टीएमटी प्रोसेस? टीएमटी प्रोसेस का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टीएमटी?
To increase the mechanical properties of the steel, thermomechanical treatment is given. That is the TMT bar. TMT bar, yes. So yield strength, tensile strength बढ़ाना है और रेंज में मेंटेन करना है विथ स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड एलांगेशन को मेंटेन करना है सारा चीज दे कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग टीएमटी प्रोसेस। TMT सही है। तो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड प्लांट, तो उसमें जो आउटर स्किन होती है, आउटर सरफेस होता है, उसकी हार्डनेस और डक्टाइल हार्डनेस या स्ट्रेंथ मिलती है, और अंदर के जो स्किन होती है उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है। तो स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी बोथ आर इंक्रीज्ड। वैसे ही एक प्रोसेस है एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सपोज आउटपुटिंग किया जाता है, हार्डनिंग किया, उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होगा, उसको रिलीव करना। So high stress induced relief. stresses in the material will be relieved by heating the steel to certain temperature and kept for some time, and again it is cooled to the room temperature. During that process, whatever stresses are induced into the steel will be relieved. It is a stress relieving process. Stress relieving. Stress relief. Yes. So Yes. it is a increase the ductility. Okay. Yeah. Brittleness will be removed. Yeah. And is a toughness. Toughness. Yes. Okay. Then electroplating. Surface coating. Electroplating क्यों होती है? Process of the electroplating. Coating on the surface which may get corroded if it is not plated. So the metal is coated on corrodable surface, metallic surface. Okay, so increase the shelf life of the product. Yeah. उस पे we are doing the plating of the another metals या coating. सही है? So it is a steel plant, है ना? Aluminium plant. One is a steel. What is the difference between the aluminium and steel? Ferrous and non-ferrous. 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 सही है. So aluminum is produced from the mainly bauxite, which is a hard rated oxide of the alumina. Okay. So first purifications of the bauxite using the electrolysis process. Okay, electrolysis process में क्या करता है? We are merging the anode and cathode in the solution of the molten aluminium. When the electrical current is passed, so aluminium is a positive ion. Positive ion aluminium will be attracted toward the cathode. It will be deposited over the cathode, and once the process is completed, इलेक्ट्रोड बाहर निकालते हैं और कैथोड पे जितना भी एल्यूमिनियम डिपॉजिट किया होगा वो कलेक्ट करते हैं। सही है? ओके। एंड नेक्स्ट प्रोसेस textile industry. Anyone? Integrated textile industry has a ginning department, spinning department, weaving department, processing department, and garmenting department. What do you mean by the ginning? Separation or cleaning of the raw material, the cotton, Cleaning from the seed. जिनिंग मतलब फार्मर जो भी क्रॉप करता है फॉर द कॉटन, तो कॉटन फ्लावर्स होते हैं। कॉटन फ्लावर्स में से फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी रिक्वायर ओनली द कॉटन फाइबर्स। तो कॉटन फ्लावर में जो लिंक होते हैं या हार्ड आउटर कवर्स होता है उसे जिनिंग मिल में रिमूव कर दिया जाता है, और अगेन जो कॉटन शॉर्ट फाइबर होंगे उसे भी रिमूव कर दिया जाता है। फिर कॉटन फाइबर को बेल बना के इन फॉर्म ऑफ द बेल उसे सेंड किया जाता है इनटू द स्पिनिंग यूनिट। ओके, सो जिनिंग का मेनली फंक्शन है टू कन्वर्ट द कॉटन फ्लावर इनटू कॉटन fibers and remove the unwanted part.
स्पिनिंग में क्या होता है, एनीवन? The fibers are aligned and twisted to make yarn. सो फाइबर, स्पिनिंग में आपका जो कॉटन फाइबर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द यार्न। तो पहले जो हम बेल्स लाए थे फ्रॉम द जिनिंग, उसे ओपनर की मदद से खोला जाता है। अगेन बेल ओपनर एंड आपका जो ब्लोरूम है, इट इज अ फंक्शनिंग फॉर द रिमूविंग इम्प्यूरिटीज, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे या जो भी कलर पार्टिकल्स होंगे, और आपके जो फाइबर्स है उसको होमोजेन्स बनाते हैं टू मेक अ यार्न। देन फ्रॉम द ब्लो रूम इट इज गोज टू द कार्डिंग मशीन्स। कार्डिंग मशीन्स में क्या होती है कि आपके जो कॉटन फाइबर है उसमें से एक सलाइवर बनती है। दिस सलाइवर गोज टू द कॉम्बिंग मशीन। कॉम्बिंग मशीन में फर्दर जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। कॉम्बिंग मशीन से ये जाती है ड्रो फ्रेम में। ओके, ड्रो फ्रेम में क्या किया जाता है, आपकी जो सलाइवर थी, इट हैज अ लो स्ट्रेंथ, सो 10-12 सलाइवर को मिक्स करके एक सलाइवर बनाई जाती है और उसका डायामीटर रिड्यूस किया जाता है। सही। सो ड्रो फ्रेम में पैरेलल नेबरहुड बहुत सारे सलाइवर को एक साथ में रखा जाता है और ट्विस्ट करके एक सलाइवर बना जाता है। देन इज गो फॉर द स्पीड फ्रेम, जहां पे वो सलाइवर का डायामीटर रिड्यूस किया जाता है, मतलब खींचा जाता है। तो लेंथ बढ़ती है यान की और स्ट्रेंथ मिलती है, डायामीटर रिड्यूस होता है। देन इज गो फॉर द स्पिनिंग मशीन, जहां स्पीडिंग फ्रेम से जो रिंग आई थी, अगेन 7-8 फाइबर सलाइवर को एक साथ में ट्विस्ट किया जाता है, फर्दर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, एंड उसे बॉबिन पे ट्विस्ट करके इनफॉर्म द यान बना जाता है। okay? So machinery used in a spinning machine, that is a blow room, carding machine, combing machine, draw frame, speed frame, ring frames and yarn। अब ये यान जाता है इन वीविंग डिपार्टमेंट। वीविंग में क्या होता है, यान को फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक बना, हाँ। Yarn to fabric. यान को ग्रे फैब्रिक बनाते हैं, कच्चा कपड़ा। ओके, हाँ। तो पहले जो यान आया था स्पिनिंग यूनिट से, वो बॉबिन पे सिलेंडर बॉबिन पे लिपेटा हुआ था। सही है। सो फर्स्ट दिस सिलेंडर बॉबिन इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन यान। कॉन वाइंडिंग की जाती है उसकी। सो ऑटो कॉर्नर वाइंडिंग मशीन से कॉन टाइप्स बॉबिन पे ये कन्वर्ट होता है। देन it is go for the wrapping and bimbing. So it is a collect of the number of wraps and krill to wind them, select called the bimbing। मतलब हमारा धाग कपड़ा धोते तो उसमें दो धागे होंगे, पर एक वर्टिकल धागा और एक हॉरिजॉन्टल धागा। तो ये बीबिंग और रैपिंग में वर्टिकल धागा और हॉरिजॉन्टल धागे को खींचा जाता है। देन गोज फॉर द साइजिंग। द यार्न इज sizing machine में the yarn is integrated with the paste which can withstand with the stress। आपका जो वीविंग होगा वो हाईली स्पीड पे होगा, तो बीच में धागा न टूट जाए उसके लिए साइजिंग, देन ड्राइंग, खींचा जाएगा और आपके लूम्स में आपका कपड़ा तैयार होगा, ग्रे फैब्रिक तैयार होगा, जो फर्दर जाएगा प्रोसेसिंग में। सही है, ये कच्चा कपड़ा है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपका जो कच्चा कपड़ा है इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। तो जो क्लोथ्स आए थे उससे स्टिचिंग ओपनिंग की जाती है, फिर गो फॉर द सिंजिंग मशीन। सिंजिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़े के ऊपर जो शॉर्ट फाइबर्स होंगे वो जला दिए जाते हैं। ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग द सिंजिंग क्या होगा,
finishing. Yeah, again, it look like a rough, continue to look rough. टॉप नहीं होगा. कुछ देर के बाद उस पे बबल्स हो जाएंगे. सही है, जैसे वुलन स्वेटर पे बबल बन जाते हैं, वैसे ही अगर आपके कपड़े पे ग्रे या ग्ले फैब्रिक पे सिंजिंग शॉर्ट फाइबर्स नहीं जलाए जाएंगे तो कुछ वॉशिंग के बाद वो बबल के फॉर्म में आ जाएंगे. सो वी आर डूइंग द सिंजिंग, देन रिमूविंग द नेचुरल impurities just like a starch, okay, and soaring. Then we are making the chemicaling, removing the color. We are making a off white to the white. Then sourcing. So यहाँ पे जो सोर्सिंग करने के लिए हमने क्लोरीन यूज किया था. टू रिमूव द दिस क्लोरीन वी आर फर्दर डूइंग द सोर्सिंग प्रोसेस. देन गो फॉर द ब्लीचिंग. ओके, अगेन सोर्सिंग प्रोसेस से उसकी जो आउटर सरफेस होगी वो थोड़ी येलोइश हो जाएगी. तो ब्लीचिंग प्रोसेस में अगेन जो येलोइश फैब्रिक है वो वाइट फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है. और जो मेन प्रोसेस है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड द मर्केंडाइजेशन प्रोसेस. तो मर्केंडाइजेशन प्रोसेस में आपके कपड़े को स्ट्रेंथ मिलती है, शाइनी मिलती है और सिल्की अपीयरेंस मिलता है. अगर ये मर्केंडाइज प्रोसेस सही नहीं होगी तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपका कपड़ा खुल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, सिंकेज आ जाएगी. सही है? तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में मेनली क्या होता है कि दे आर रिमूविंग द नेचर impurities अवेलेबल इन द फाइबर्स just like starch, colors, and other impurities using the chemical processes. After removing all the chemical properties, they are doing the bleaching, give the whiteness, and doing the merchandising process. Merchandising process के बाद में आपका कपड़ा कच्चा कपड़ा टू पक्का कपड़ा बन गया. Then is goes for the dyeing, कलर के लिए प्रिंटिंग एंड फिनिश goods. तो यहाँ पे आपका पक्का कपड़ा बन जाता है, दैट वी आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट. एक और डिपार्टमेंट होता है विच इज कॉल्ड द गारमेटिंग, विच कन्वर्ट द फैब्रिक इनटू गारमेंट. तो भाई जो भी बनाना है उस हिसाब से पहले कटिंग होती है, कटिंग के बाद में सीविंग होती है, सीविंग के बाद में वैल्यू एडिशन होती है. वैल्यू एडिशन मतलब जो बटन लगाने हो, गैर लगाने हो, स्टिकर्स लगाने हो, वो होती है. देन वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद आयरनिंग होती है, आयरनिंग के बाद पैक एंड डिस्पैच, जो हम रेडीमेड गारमेंट परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट. सो जो मशीन होता है इसी नाम से होता है, सिंजिंग मशीन, डिसाइजिंग मशीन, केमिकलिंग मशीन, सोर्सिंग मशीन, ब्लीचिंग मशीन, मर्केंडाइजिंग मशीन, डाइंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन एंड एल्स. Okay, cone winding machines, wrapper, beamer, sizing machine, drawing machines, loom machines, and else. See? So these are the about textile industries. Okay. Any question? किसी को कुछ पूछना है तो? Okay. Then we are going for the food industry, से milk industry. मिल्क में ऑल द रॉ मटेरियल्स कलेक्ट फ्रॉम द विलेजेस. विलेज में जो भी फार्मर्स है, एनिमल हस्बेंड्रीज, दे आर मिल्किंग द मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, और दिस मिल्क आर कलेक्टेड इन द मिल्क कलेक्शन सेंटर्स ऑफ द विलेज. जहां पे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ द मिल्क, raw milk. Yes. क्या मेजर किया जाता है, यूजिंग द Fat. Fat. फैट. Fat. Yes. Fat. यूजिंग द लैक्टोमीटर्स फैट मेजर की जाती है. देन Fat. वेट करके उसे चिलिंग में चिल किया जाता है, चिलर में रखा जाता है. देन इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज टैंकर, उसे डेयरी में भेजा जाता है.
तो डेयरी में सबसे पहले इट इज अनलोड करके उसे साइलो में फीड किया जाता है। साइलो में फीड करने के बाद में सेंट्री सारी फैट निकाल दी जाती है, मिल्क फैट निकाल दी जाती है और सिल मिल्क बचता है। फिर होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि आपके जो सील मिल्क में है, जो सेंट्रीफ्यूज करके फैट निकाल दी, जो बाकी बचा था दूध, उसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी में आपकी फैट ऐड की जाती है। ओके, जैसे आप किसी भी दूध को लोगे तो अमूल की वरियस कैटेगरी दूध आती है, जैसे अमूल ताजा, अमूल शक्ति, अमूल गोल्ड। सो ये सब में क्या डिफरेंस होती है? तो इसकी जो फैट 5%. कैटेगरीज होती है, फैट। ओके, सो अमूल गोल्ड में इट इज इन रेंज ऑफ द 4.5%, अमूल ताजा में होती है इन रेंज ऑफ द 3%, अमूल स्लिम मिल्क में होती है इन रेंज ऑफ द 2%। तो फैट कम होती। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में स्पेसिफिक क्वांटिटी में फैट और एसिड रेशियोस में मिक्स किया जाता है। ओके, देन प्रोसेस कम टू द होमोनाइजेशन। अब आप स्लिम मिल्क में फैट करोगे तो अपने आप तो घुल नहीं जाएगी। जैसे हम घर पे दूध गर्म करते हैं और ऊपर फैट निकल आती है, तो फैट अपने आप बाद में दूध में घुल नहीं जाती। तो फैट एंड स्लिम मिल्क को एक दूसरे से साथ सही से मिलाने के लिए, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट लाने के लिए होमोजेनेसिस प्रोसेस होती है। ओके, सो यहाँ पे आफ्टर द होमोडाइजेशन स्पेसिफिक फैट का दूध हमें मिल जाता है। इस गोस टू द पैस्चराइजेशन प्रोसेस। पैस्चराइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट अगेन इट इज अ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द मिल्क। तो मिल्क में जो भी व्हाट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, पहले पैस्चराइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, विद इन सम सेकंड इट इज हीटेड अप टू द 90 डिग्री सेल्सियस। तो रीचिंग द 90 डिग्री, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी clarified. Then again suddenly within a fraction of time second वो 90 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर ला देते हैं। तो वन, दे आर डूइंग द हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग जस्ट दे आर मेकिंग अ कूलिंग। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर दैट मच रैपिडली, तो बाकी बचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां भी क्लीन हो जाते हैं। तो आफ्टर द पैस्चराइजेशन द मिल्क इज गो फॉर द कूलिंग, साइलो में पैक किया जाता है। Then is go for the packing department and after the packing it is a storage करके dispatch किया जाता है। ओके, तो मिल्क में यहाँ पे डेयरी में कोई प्रोसेस नहीं होती, सिर्फ देयर इज अ फैट सेपरेशन एंड फैट मिक्सिंग एंड पैस्चराइजेशन प्रोसेस होती है। सेम वन मोर प्रोडक्ट दैट इज रिलेटेड टू द आइसक्रीम, सेम ही प्रोसेस है। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है वो वेट होके ब्लेंड किया जाता है। तो अगेन पैस्चराइजेशन प्रोसेस, देयर इज अ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होमोजेनाइज प्रोसेस, जो भी फ्लेवर ऐड करते हैं या जो भी मिक्सर्स डालते हैं होमोजेनाइज मशीन में उसे होमोजेनाइज करते हैं। एजिंग प्रोसेस, एजिंग मतलब जैसे हम फ्रिज में आइसक्रीम कैसे बनाते हैं भाई, दूध को उबाल के रात को फ्रिज में रख देते हैं और सुबह वो क्रिस्टलाइज होता है। तो एजिंग प्रोसेस इज नथिंग बट टू अलाउ टाइम फॉर द फैट टू कूल डाउन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, वंस क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है देन ऐड द लिक्विड फ्लेवर। लिक्विड फ्रीजर के बाद में दे आर गोइंग फॉर द फर्दर फ्रीजिंग, नाउ इट इज अ माइनस डिग्री में, देन गो फॉर द पैकिंग or hardening at the minus 34 degrees and dispatch for the output. सही है? तो again it is a just process of the mixing of integrant and flavor and make the milk into the crystallization process that is done in the aging process. And then addigible oil.
Okay, visible edible oil slide. No, small, sir. Sorry. Yes, now. Okay. Okay. So we are getting oil from which types of seed? Seeds. Sunflower seeds. Sunflower, groundnut. Sunflower, Sunflower, groundnut, groundnut, peanut, then peanut, yes. castor oil, Castor oil, yes. Yeah, we soybean. Almond. Soybean, yes. Okay. So each seeds of a flower has a different characteristics. सही है. So according to the characteristics, there are some common process in a edible oil. तो पहली जो process है, it is the same cleaning. Okay, whatever the seeds come from the farm, उसे through the water clean किया जाता है. So by applying the water, उस पे जो dust particles होंगे वो निकल जाएंगे. Then is go for the magnet bed. So ferrous materials निकल जाएगा. Okay. Then it's go for the drying. So जो moisture absorb हुआ था due to the water, वो dried किया जाएगा. Okay. So after the cleaning is go for the crushing and heating. तो हीट क्यों करते हैं? तो जो वही वाटर से वॉश हुए थे तो जो मॉइस्चर कंटेंट थे वो रिमूव हो जाते हैं. और हीटिंग से और फायदा क्या होता है कि अंदर के जो ऑयल कंटेंट होते हैं दैट इज अ लिटिल बिट एक्साइटेड टू कम आउट. और जब क्रश करते हैं उसे थ्रू द बाय क्रशिंग ऑयल कंटेंट आर कम आउट फ्रॉम द सीड्स. बट ये मैकेनिकल क्रशिंग से वी आर हार्डली गेटिंग टू 5 to 12% ऑफ ऑयल which is available in the seeds. Okay. So after that, it is a pass through the solvent extraction plant, which is a chemically reactions to extract the oil from the duff of the seeds. So here we are adding the hexane with a crushed seed, which is come from the crushing sections. So what this hexane are doing a chemical reaction with the oil and help them to make a more hydrables और निकलने में बाहर आता है. So one after the heading, again we are applying the high pressure in the solvent extractor. So up to the 90 to 95% oil are come out from the oil seeds, and remaining dups are used as a byproduct that may be for the organic fertilizer or feeding to the cattle. Okay. So now we are extracting oil through the solvent extracted by adding a hexane. We have add some chemicals. So further we require some process that's called the degumming process. Okay. Just like a acidic treatment whereby gums are precipitated and separated by the centrifugal separations. Okay, just like a castor oil or sunflower oil या maize oil. ये उसमें देखोगे तो बहुत सारा चिपचिपाहट होती है. That's called the gum. अगर वो चिपचिपाहट we do not remove, then it is your oil is not digestible fully. So we are doing the degumming process. For the degumming process, in a mixer, we are adding the acid. Okay, this acid react with the gum portion and make the phosphate, which is a more hydrable. Hydrable matlab which can dissolve in the water. So after making a gum is a hydrable, we are adding the water. So your phosphate acid mixed with the water, and now oil and water will be have a different separators. आपके नीचे water होगा और ऊपर oil होगा. तो through the filter या separators, we are removing the degums and gums, impurities. Okay. After the degumming, we have the acid here. Okay. So your oil become acidic in nature. So we are doing the neutralization process. Okay. Neutralization process, simply we are adding some acid है तो base add करेंगे. Okay. So here we are adding a sodium hydroxide solution or say caustic soda
in a line mixer. Your sodium hydroxide neutralize the excess acid and solidify fatty acid into the oil. Again, using the separator, we are removing the soft talks and use water जो है again separator decummed natural oil and spent water remove करते हैं. Now, due to the hexane neutralization depressing, your oil become वो कैसे हो जाता है almost in the black in color. So we are doing the bleaching process. So जो डिगम्ड या न्यूट्रलाइज ऑयल आया था उसमें हम वी आर एडिंग द ब्लीचिंग क्ले. दिस ब्लीचिंग क्ले विल एब्सॉर्ब द अनवांटेड पिगमेंट्स, okay, and impurities absorbed by the clay, and that impurities are filtered out, so we get the bleach oil and the clay differently, and now it is available for the eating. But one more problem, due to these types of many chemical process, your oil has lose smell. उसकी smell चली गई है. So we are doing the odorization process. So artificial smell are sprayed over the oil. The sunflower smell. Soybean has a soybean, tali hai to tali. That artificial smell we are sprayed over the oils and making the odors irritable. Okay. In some process, it is a de-waxing process. Just oil like a sunflower or maize, okay, have wax present in them. वहाँ पे we are doing the de-waxing process. So at the low temperature, this wax give hazy appearance to the oil, which is not liked by the consumer, and it is therefore essential to remove this wax to the bottling and marketing. So only for sunflower oil and maize oil, we are doing the de-waxation process. Then oil is physically refined if there is a hard particles remain in form of the knots, storage, and go for the packing. Okay, this is how eligible oils are manufactured or processed. Okay. Any questions? Any doubt? किसी को? Which type of chemical or bleaching agent is being used in the bleaching process? सर वो केमिकली या केमिकल प्रोसेस क्या होता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस या नाम इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. ओके, एज ए वैल्यूअर हमको मतलब वो नॉलेज भी ओके वो है तो ठीक है, अदर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एसेंशियल. कोई भी केमिकल प्रोसेस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस कहीं पे भी. तो फिजिकल रिफाइनिंग कैसे? फिजिकल रिफाइनिंग में मतलब अगर कुछ इम्प्यूरिटी सॉलिड इम्प्यूरिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कुछ बची होगी ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन, ड्यूरिंग द डीऑडराइजेशन, ड्यूरिंग द डीगमिंग या डीवैक्सिंग प्रोसेस, तो वो फिजिकल रिफाइन होती है. मतलब हम जैसे फिल्टर से घर पे फिल्टरिंग करते हैं वैसे ही प्रोसेस फिजिकल रिफाइनिंग. तो जो डीवैक्सिंग प्रोसेस और फिजिकल रिफाइनिंग दोनों डीऑडराइजेशन प्रोसेस के बाद जरूर होगा? नहीं, डीवैक्सिंग प्रोसेस ओनली फॉर द सनफ्लावर एंड मेज ऑयल. वो कब होगा सर? हाँ, उन दो ऑयल के लिए डीवैक्सिंग प्रोसेस होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ फॉर ऑल प्रोसेस. सही है. सनफ्लावर और मेज के लिए भी फिजिकल रिफाइनिंग तो होगा ही होगा. सारे ऑयल्स के लिए फिजिकल रिफाइनिंग होगा आफ्टर द डीऑडराइजेशन, बट only for sunflower and maize oil after deodorization de-waxing process भी होगा. ठीक. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस नॉर्मली मशीन्स के नाम या प्रोसेस के नाम से यूज होते हैं, जैसे why we are doing the degumming process, yeah, which in industry neutralization process are done, yeah, in each industries
deodorization process are done, in which industries de-vaccination process are done, okay, in which industries solver exercise plant is used, ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, या इन विच इंडस्ट्री कार्डिंग मशीन आर यूज, या कार्डिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्डिंग मशीन। सही है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। लेट्स सी वो सैंपल पेपर में से अगर कुछ दिख जाता है तो ओके, विजिबल सैंपल पेपर। No, no. No, sir. हाँ हाँ, No. कर देते। Now visible. Oh, yes. Okay. So equipment arranged in a sequence as per the requirement of article manufactured is known as a, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपके मशीन लगाए तो इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लेआउट। Product data, yes. Process flow chart help to understand sequence of process. तो ये देखिए, blast furnace is used in the following industries. Okay? So blast furnace used in the steel industries. Which of the following calculation of the weight of the reaction vessel in a chemical industries? Okay, calculating weight of the reaction vessels. Reaction vessel weight calculation के लिए आपको क्या चाहिए? तो भाई location, thickness of the plate, year या depreciation. So thickness of the plate Thickness, yes. required for the. In case of the dairy industry, the process that prevent cream and milk from separating is known as a, okay, milk और cream को करने का, What over जाए? जो cream and milk को इकट्ठा करके homogeneous form करती है। सही है? Okay. So which of the following used to transfer heat from one fluid to another fluid? It is a heat exchanger, जो next chapter का है। Okay, so based on the process कुछ questions हो सकते हैं, based on the machinery या based on the many times unit के नाम पूछते हैं, okay, या process layout और production layout में से 2 questions हो सकते हैं। तो So पूरा प्लांट एंड मशीनरी में से कितना मार्क्स आएंगे? प्लांट एंड मशीनरी में से more than 65% मार्क आते हैं। सही है, कुछ जनरल छोड़ के more than 65 या 67 के अबो मार्क प्लांट एंड मशीनरी के, कॉमन सब्जेक्ट को छोड़ के। और उसमें भी तो आपके 26 मार्क ऐसे फिर केस स्टडी के हैं। जिसको केस स्टडी आ गया उसको पास होने में दिक्कत नहीं होती ना। स्टडी आप भी लेंगे? हाँ नेक्स्ट 2 क्लासेस से? हाँ, अगेन पहले थियरी खत्म करेंगे फिर केस स्टडी कर लेंगे। ठीक है सर। या बंसल जी, अगर कोई क्वेश्चन में हो तो Yes, आज sir. का हम यहीं पे खत्म करते हैं। So friends, this is all from our side for land and plant and machinery asset class and CEP session. If you are having any doubt or question, then we can take. Otherwise, we are going to compile today's session. Any doubt? सर मेरा डाउट जेनरिक है। सो डू वी गेट ए क्वेश्चन पेपर्स, आई मीन प्रीवियस ईयर और सम अदर ईयर्स क्वेश्चन पेपर? देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है। दिन में 4 बार एग्जाम होता है और रोज होता है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस सेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो मॉक टेस्ट में दिया गया है वही प्रीवियस ईयर का आप सोचकर चल लीजिए अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस हैं आपको दिए गए हैं वही पिछले जो अभी तक का हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, उन्हीं में से ही वो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन वहां पर आते हैं।
उल्टा भी सोच सकते हैं। फॉर इजी थिंकिंग। इसीलिए आप बोलते हैं पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, सीवी की लाइब्रेरी में मोर देन 1.5 लाख क्वेश्चंस हैं, और वहां पर आपको कितने आने वाले हैं? 86 या 87, उस दिन हमने कैलकुलेट किया था। तो कहाँ से लाएगा वो? उसी में से है। कहाँ से लाएगा? चांद पर तो जाकर लाएगा नहीं। अगर लाएगा भी तो सिलेबस से रिलेटेड ही होगा ना। और संजय सर ने वो सब कुछ आपको पढ़ा देना है। क्यों भरत जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बेसिकली तो इट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल। अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स। Yeah, this is feedback from our already successful candidates, Bharat Kumar ji and Amar Singh sir, Varun sir. सही है सर, सही है, बिल्कुल सही कहा। शेखो सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बैच के लिए? सर रिवीजन करन, बस रिवीजन करके सिलेबस बहुत है सीवी के पास, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। हमारे टाइम ਚੰਡੋਕ ਜੀ में तो ਪਹਿਲੇ ये भी नहीं था। शेखो सर, ਚੰਡੋਕ ਜੀ लोग सर, ये ਚੰਡੋਕ सब ਜੀ मेरे ਪਹਿਲੇ बैच के ही ਕੈਂਡੀਡੇਟ है। ਸੀ। ਚੰਡੋਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बिल्कुल। हम लोगों ने एक ही बैच में किया था। हमारे टाइम में तो बुक्स भी नहीं थे, सिलेबस भी पता नहीं चलता था कहाँ से हाँ नहीं, ढूंढना कुछ है। नहीं सर, हाँ। बिल्कुल। आपके टाइम के नहीं, लिए तो बहुत कुछ है। करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। So, I think no other doubt or question is there. So, we are going to compile today's session. Thank you, Sanjay sir, and for both the observers for staying with us for this session, and Sanjay, especially Sanjay sir, for sparing his valuable time for this session and completing the session within the permissible time limit as prescribed under the syllabus. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. And now we are open to for 0 ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट लेआउट, ऑटोमेशन सिस्टम्स, मटेरियल फ्लो। ओके, और बाकी का जो चैप्टर है उसमें अबाउट 9 to 10 इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जो उसके मेजर मशीनरी है वो डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है, इट इज अ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन का मतलब क्या होता है? So, a place where man, material, machines, and equipment are brought together for the manufacturing the product. As a valuer of a plant and machinery, it is a valuer duty to access plant location is a proper or not. Many times, due to the plant location, profitability of assets are damaged compared to its peer, and its value are drastically down. Okay. So for the selection of the plant location, what considerations are taken? Produce close to customers. कैसे प्लांट क्लोज टू कस्टमर्स बनाने चाहिए? किस प्रोडक्ट के लिए प्लांट का लोकेशन क्लोज टू कस्टमर होना चाहिए? Those products are highly perishable, जो प्रोडक्ट जल्दी बिगड़ जाते हैं वैसे प्लांट क्लोज टू कस्टमर होने चाहिए। नीड टू लोकेट नियर लेबर फोर्स। कौन से प्लांट लेबर फोर्स के पास होने चाहिए? दोज यूनिट रिक्वायर्ड अ लार्ज मैन पावर। ओके, जैसे आईटी इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। कौन से प्लांट रॉ मटेरियल के पास में बनाने चाहिए? सॉरी, स्टील प्लांट। स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, जहां पे बल्क Crusher. अमाउंट में आपको रॉ मटेरियल चाहिए।
बल्क में रॉ मटेरियल चाहिए, वैसे प्लांट। सही है। सो selections of the plant location is also one of the important factor considering in the valuation. So a valuer has to examine plant site and its layout while assessing the value of the plant layout. What is the plant layout? It is the, I mean, planning of the places where Where machinery material has to be machine. fixed for minimum movement of the labor, material, etc. So that at minimum cost, the production can be produced for the benefit, for more profit. Locating of the man and machinery in a such a way it produce maximum output at minimum cost. Okay, economic concept. So plant layout is a systematic arrangement of the various department, machine, equipment, and services of a man for economic, effective, and efficient functioning of the organization for the productions of any goods. Okay. Maximum output at minimum cost, economic, effective, and efficient. So for space needed for the material movements, storage of hazardous energy as emergency escapes or product size. So there are the 4 types of plant layout mainly. One is a fixed position layout, product layout, process layout, and hybrid. The first is a fixed position layout. Fixed position layout means of आपका जो Machine surface. प्रोडक्ट है इट रिमेन ए फिक्स, एक ही जगह पे आपका प्रोडक्ट रहेगा. मैन एंड मशीन कम टू योर प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग इट. जैसे कोई वेसल बनाना हो, स्टीमर बनाना हो, एरोप्लेन बनाना हो या सबमरीन बनानी हो, तो वो उसके डॉक में, ड्राई डॉक में फिक्स रहेगी. मैन एंड मशीन्स कम और उसे बनाते जाएंगे. तो फिक्स लेआउट कब सिलेक्ट किया जाता है? व्हेन Product is heavy. The size subject of is heavy. size of your product is a large and you have to made it a customize. कस्टम के ऑर्डर से बनाना है. सही है. कस्टमाइज प्रोडक्ट विथ अ लार्ज इन साइज. सेम प्रोसेस लेआउट. प्रोसेस लेआउट में क्या किया जाता है कि सिमिलर टाइप ऑफ मशीन्स को एक डिवीजन या एक सेक्शंस में रखा जाता है. जैसे ये फिगर है, ओके, उसमें सारे लेथ मशीन्स को एक सेक्शन में रखा है, सारे मिलिंग मशीन को एक सेक्शन में रखा है, ड्रिलिंग मशीन को एक सेक्शन में रखा है, ग्राइंडिंग मशीन को एक सेक्शन में रखा है. सारे मशीन को, सिमिलर मशीन्स को एक सेक्शंस में रखे जाते हैं. एंड योर प्रोडक्ट मूव फ्रॉम मशीन टू मशीन. आपका प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरे मशीन में मूव होता है और प्रोडक्ट बनती जा रही है. सही है. तो कब ऐसा प्रोसेस लेआउट सिलेक्ट किया जाता है? जब आपकी प्रोडक्ट की साइज है वो स्मॉल होगी और आपको उसे बल्क क्वांटिटी में नहीं बनाना है. सही है. थर्ड है प्रोडक्ट लेआउट. जब आपको कुछ बल्क क्वांटिटी में बनाना है तो आप क्या करेंगे? सारे मशीनों को प्रोसेस सीक्वेंस के हिसाब से लगा देंगे. और आपका जो रॉ मटेरियल है वो मूव फ्रॉम द वन मशीन टू अनदर मशीन, सर आपकी प्रोडक्ट बनती जाएगी. इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट लेआउट. सारे मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से सिक्वेंशियली लगाया दिया गया है. आपकी प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरे मशीन पे मूव होती जाएगी और शेप लेती जाएगी.
then group layout. Okay. So it is a mixture of the product and process layout. जब भी कोई इंटीग्रेटेड प्लांट हो, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो या इंटीग्रेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, वहां पे सारे पार्ट स्पेयर पार्ट प्रोसेस लेआउट में बनते हैं। फिर प्रोसेस लेआउट में से वो असेंबलिंग लाइन प्रोडक्ट लेआउट में आ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द ग्रुप लेआउट, कॉम्बिनेशन ऑफ process layout and product layout. Okay. Then type of productions. So production may be a jobs of type productions. Yes, that is a low volume production, customized product. So fixed layout. Batch productions, which are prepared stage by stage over a series of workstations, just like a bakery product, pharmaceutical product, etc. Mainly it is a process layout. Mass productions, large volume quantity to satisfy high demand. Product layout. Large mass production we can classify in a quantitative productions that measure in terms of the number. Continuous productions that measure in terms of the ton. Okay? जैसे स्क्रू है, नट्स है, नेल्स है, मोल्ड्स है, उसका आउटपुट मेजर होता है लाइक 1000 million, 100 million, 1 crore nails per day, like that. जबकि पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट का मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक टन पर एनम या मैट्रिक टन पर डे या मेगावाट. दैट्स अ कंटिन्यूअस प्लांट. Then process sequence. Okay. Process is a sequence of operations and a process designed to create specific product. It is nothing but the turning material into the product. Every stage is cover one or more resources. This input then serve as an input for the next stage until the goal or result is achieved. Okay. तो प्रोडक्शन के लिए कैसे सीक्वेंस होती है, तो पहले प्रोडक्शन प्लानिंग किया जाता है, देन प्रोडक्ट शेड्यूलिंग किया जाता है जहां पे अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेस किए जाते हैं, देन प्रोडक्शन सीक्वेंस किया जाता है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो टन बाय टन एक डिवीजन या एक सेक्शन से फॉर्म होते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन के आती है. सेम प्रायोरिटी रूल्स फॉर द सीक्वेंस जॉब और शेडेड मशीन. तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउटपुट, जिसका ऑर्डर पहले मिला उसी को बना देते हैं. शॉर्ट प्रोसेस टाइम रेट, जिसको बनाने में कम टाइम लगता है उसे प्रोडक्ट कर लेते हैं. लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम, जिसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा उसका प्रोडक्शन पहले कर देते हैं. या अर्लीस्ट ड्यू डेट, जिसको पहले डिलीवरी देना है उसका प्रोडक्शन पहले करते हैं. सही है. तो प्रोसेस एंड प्रोसेस सीक्वेंस. फिर आपका जो मटेरियल फ्लो है ड्यूरिंग द प्रोसेस कैसे फ्लो होता है उसके बेसिस पे देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल फ्लो. ओके. जैसे लाइन फ्लो, मतलब एक तरफ से आपने रॉ मटेरियल डाला और दूसरी तरफ से आपका आउटपुट मिल जाएगा. सो मेजरली इन अ रिसाइकल्ड पेपर मिल यू विल फाइंड दैट एक तरफ से आप रॉ मटेरियल डालते हो और दूसरी तरफ से आउटपुट मिल जाते हैं. सो ऑल मशीन आर अरेंज इन द सिक्वेंशियली प्रोडक्ट लेआउट में. एल टाइप फ्लो, जस्ट लाइक एस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट. मिक्सिंग प्लांट में पता है आपको दोनों तरफ से रॉ मटेरियल्स आते हैं और बीच में मिक्सर होता है जहां पे प्रोडक्ट बनती है और कन्वेयर बेल्ट पे आउटपुट आ जाता है. देन सर्कुलर फ्लो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर बल्ब. नॉर्मली जो पहले फिलामेंट बल्ब आता था उसके लिए सर्कुलर फ्लो. यू टाइप फ्लो
सही है। तो इलेक्ट्रिक मोटर या छोटी असेंबलिंग लाइन के लिए यू टाइप फ्लो, एस और इन्वर्टेड फ्लोस, बड़ी असेंबलिंग लाइन के लिए, जैसे कार असेंबलिंग लाइन के लिए जो जिगजैग में घूमती रहती है। कॉम्बिनेशन ऑफ द यूएन लाइन, combination of the line as flow, combination of line and circular flow. Various types of flows are there in the industry. Then complex flow, that may be processing upward. मतलब आपका जो रो मटेरियल है हमेशा ऊपर तरफ की और घूमता है, उस पे प्रोसेस होती है और आउटपुट मिलता है। देन रिफ्रैक्टिव टाइप मल्टी बिल्डिंग स्टोर, जहां पे आपका जो रो मटेरियल्स है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अप डाउन होता रहता है, प्रोसेस होती रहती है और आउटपुट मिलता है। मेजरली एनी टाइप्स ऑफ केमिकल प्लांट, दैट में बी अ ऑयल रिफाइनिंग, दैट में बी अ फर्टिलाइजर, दैट में बी अ केमिकल प्लांट्स। देन इंक्लाइन फ्लो, जहां पे आपका रो मटेरियल्स इंक्लाइन फॉर्म में आगे बढ़ता है, उस पे प्रोसेस होती है और फाइनली यू आर गेटिंग द आउटपुट। So various types of material flow possible according to the your product and plant design. Okay. So first part, it is a plant location, plant layout, productions, type of production, sequence of productions, and material flow. Okay. Then automation. What do you mean by the automation and type of automation? PLC. Material will be transferred automatically from one machine to another machine. That is by conveyor. Is one example. Automatic control. Yes. Automatically, material will be transferred. Robotic. And processing also automatically it will be carried out. Programming, just like suppose CNC lathe machine. So once the program is given, it will do the initial product. Like PLC, programmable logic control, also can be used for the automatic movement of the material, or speed control, everything like that. Food processing is an automation. So automation can be defined as a process of following predetermined sequence of operation with little or no human labor, specialized equipment and devices that perform and control manufacturing process. So the elimination of the manpower and specialized machinery that perform a manufacturing process their own. So there are the mainly three types of automation. One, there is a fixed automation. Just like our traffic signal, it is a fixed automation. Every half minute or 30 seconds, it will be glow and glow off. सही है। Our oven, हम घर में जो ओवन में बैक करते हैं, we set the timer for the 1 minute. 1 मिनट के बाद में ओवन अपने आप बंद हो जाएगा। It is a fixed automation. So the sequence of process of operation fixed by the equipment configuration. Many operations are integrated into the single piece of the equipment. Productions are designed to produce standardized products, just a engine block, valve, gear, and spindle. It has a high production rate, hence used for the mass production of the part. Okay, programmable. All the CNC machines nowadays available. You have to program according to the whatever the product you require. लेथ मशीन है तो लेथ मशीन में आप प्रोग्राम चेंज कर दो, अकॉर्डिंग को जो लेथ मशीन है ऑटोमेटिकली अपना फंक्शंस चेंज कर देंगी. सो इट इज अ programmable automation. Sequence of operations are controlled by a program so that same equipment is used to produce different product. Okay, it is not possible in the fixed automation. Then flexible automations.
It is an extensive programmable automation. There is a no time loss for the changeover from one part to another while programming system. It has a lowest production rate. जो एंटायर बड़े प्लांट में होता है कंटिन्यूअस ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि क्या करना है, उसी हिसाब से वो अपने एक्चुएटर या कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल देगी और सिग्नल के अकॉर्डिंग मोटर पंप वाल्व ऑन ऑफ हो जाएंगे. इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशंस. There's a two types of automation normally. It is a closed loop automations and open loop automations. Okay. Closed loop control systems. In closed loop control systems, there is no feedback from the output. Okay. Output जो निकला उसे feedback में नहीं दिया जाता है. A control action is applied on the output system. It does not receive any feedback signal to control to alter the outputs. Okay, so it has a set point, controller, actuator, processor, and distribution. While the closed loop control system में जो output है, it is feedback to the control systems. Feedback दिया जाता है और output के हिसाब से जो controller है, it will take the necessary actions, plus or minus, and modify the output. The output of the process affect the input control signal. The system measures the actual output of the process and compare with the desired output. Okay. So, open loop control system there is a no feedback signal to the controller, while closed loop control system there is a feedback signal to the controller. So, जो closed loop systems है, okay, it have a consist assembly of equipment and material related to the productions. So measurement, सारे sensors are work as a measurement. Okay, it is a conversion of process variable into the analog of digital signal that produced by the control systems and device called sensor or instrument. Typically, this measurement at the pressure level, temperature or positioning. Okay, तो एक मेजर करता है, दूसरा इवोल्यूट करता है. Okay, so the measured value is examined compared with the desired value of the set point. कंट्रोलर में सेट पॉइंट के साथ में कंपेयर किया जाता है. Correction action needed to maintain proper control determine and device call the controller और सिग्नल कंट्रोलर को सेंड किया जाता है. Then correction action control. The control element in a control loop is a device that directly infuse the products or a manufacturing sequence. वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है और ऑपरेट वाल्व पंप या जो भी कुछ ऑपरेट करना है उसे ऑपरेट करेगा. ओके, सो आपके कंट्रोल सिस्टम्स में, ऑटोमेटिक सिस्टम में आपके मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स होंगे, दैट में बी अ वाल्व पोजीशन, मोटर स्पीड, डंपर पोजीशन, ईटीसी. और आपके कंट्रोल्स वेरिएबल होंगे टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर, पीएच, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, वेट, स्पीड एंड मोनी थिंग्स. सही है. सो measurement, evolution and control. Okay, here what do you mean by the instrument? Instrument में क्या क्या चीज आती है? Anyone? Control valve. Hello, sir. हाँ. Control valves in process plant. Okay, बाद में. And related to instrument. Pneumatic valves. Pneumatic pressure gauge, pressure controller. There are so many related equipments. Pressure indicator, temperature indicator, these are all instruments. Pressure controller. Okay, so temperature आपके controller. इंस्ट्रूमेंट में आएंगे पहले तो सेंसर. सही है. दैट मेजर टेम्परेचर, लेवल, ह्यूमिडिटी, पीएच कुछ भी सेंस करते हैं.
सेंसर के बाद में आएंगे ट्रांसड्यूसर. एनीवन, व्हाट यू मीन बाय द ट्रांसड्यूसर? which measures current and transducer. This ट्रांसड्यूसर converts the Pressure. electrical signal into इट्स digital. ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द सिग्नल्स. Signals. सही है. Pressure to electrical इलेक्ट्रिकल, signal. हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट, न्यूमेटिक टू इलेक्ट्रिकल्स या Yes. रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या करंट वोल्टेज या नहीं, मतलब इट्स कन्वर्ट द सिग्नल्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. Analog or देन digital. आते हैं ट्रांसमीटर. एनीवन, व्हाट यू मीन बाय द ट्रांसमीटर? सिग्नल को ट्रांसमिट करना. Signal. ट्रांसमीटर सिग्नल को एम्पलीफाई करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है. कहाँ भेजेगा? अप टू द, ICs or processing units. सही है, अप टू द डिस्प्ले यूनिट्स. डिस्प्ले यूनिट्स और अप टू द कंट्रोल रूम और कंट्रोल पैनल्स, जहां पे डिस्प्ले में होते हैं सारे गेजेस. और क्या होगा डिस्प्ले में? रिकॉर्डर्स. Record. सही है. तो आपके इंस्ट्रूमेंट में आएंगे सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, डिस्प्ले, all the types of display gauges and the recorders. Okay, which work for the controlling actions. Okay, any doubt, any questions in automations, material flow, process of sequence? Okay. In a market nowadays, you will find the two type of control systems. There is a programmable logic control systems for CNC types of machines, and distributed control systems that able to control the entire plant. PLC and DCS. Any doubt? किसी को? It is all the theoretical portion. So we start the industrial processes. So first we start a steel industry. Anyone idea how steel industry work? Yes, sir. Yes, sir. I can say. Hello. Yeah, again, welcome to all. Last day we have discussed some procedure related to the valuation process, identifications of assets and some terminology. And we also discuss about the leasing of the assets, accounting standard related to the leasing, which types of lease consider as a finance lease or operating lease. Okay. Further, today we had discussed a purpose of valuations. Yesterday also we have discussed that your valuation process will depend on the mainly on three things. One, that is the purpose of valuation. Second, what base of value you have selected according to your purpose of valuations, and under which circumstances and conditions you are doing the valuations. Means of how data is available, what is the asset, how positioning of the assets, scatteredness or location of the assets, criticality of the assets, like that. Okay. So each and every asset, according to this purpose, must be identified, or valuation should be a must. Just like there are the bases of value, that may be a market value, market rent, equitable value, investment value, liquidation value. Okay, so there are the 6 bases defined in the IVS, and furthermore, one defined, that is a fair value for the accounting purpose. So according to your purpose, you have to select a proper base of value, and according to the definition of the base of value, you have to proceed further your valuation process. And same should be aligned in your inspection too. Okay. Just like first you are doing valuation for the bank finance or say mortgage purpose. So your procedure keep in the mind that by you are doing the value for the secure lending
So all the asset which is under the mortgage must be identified properly. You have to evaluate the properties against the four pillar of the valuations, that is technical, legal, social, and economical. Okay. You have to not do not include any value of the assets which is not part of the mortgage. Yeah, you have to not uh, miss missing the any asset which is a part of the your mortgage. So the person or financial institutes who are taking a mortgage and providing the financial facilities is called the mortgager. And the person or entity who is receiving the financial facilities again the asset is called the mortgagee. Mortgagee and mortgager. Okay? जो देता है mortgager, जो लेता है mortgagee. So when you are doing the identification of your asset must be a proper. Okay. In identifications, micro identifications and macro identifications. You have to identify each and every asset in all ways. Okay? All the possible ways. Same time, you have to check the legality. Okay? Legality in terms of the uses means of just like statutory permissions available, all the statutory legal permissions available by the state, central, and government. Install capacity against the license capacity, use of the machines, product of the out factory or unit, or its byproduct. Same ownership of the asset. We have discussed a company or site may available that asset based on the lease contract or a rent. Then technicality. Is an asset is suitable for or not? We have discussed the evolutions of technology. Okay, so same time you have to evaluate against the is technology or technical parameters or technical aspect. Is assets are marketable or not? If assets are too older or obsolete, may there is a reductions or reduce the marketability and impact sellabilities. Okay. Same, you have to provide adequate informations. Okay. Adequate information means in terms of the legal and technical. Who is the owner, for which product license is provided, how much installed capacity, how much license capacity, which are the statutory permissions or measures company has obtained, which are the pending, which are the required renew. Okay. And each and every technical specifications, yeah, from which anyone can identify, just like a serial number, manufacturing year, manufacturer, name of the machines, probable layout diagram, or location of the machines. It should be a part of the report. How you make the inspections at the time, which machinery was available on the site, which machinery was not available on the site, which are the under the ownership of the mortgagee. So that should be a clear picture in your report, and you have to make the inspections in a same way. Then present, permitted, and potential use. Is the asset have any alternate use or not? Just like many times, there's a chemical plants, they are manufacturing the chemical A and B. If demand of A and B is decreased, so is it possible to manufacture by making alternations or without making alternations, alternative product or not? या जैसे मोटर है या अनदर कंपोनेंट्स है, अनदर टैंक वेसल्स है, हीट एक्सचेंजर, he may use in the other industry or other plant or not.
So present, permitted, and potential use means of potential use means of is there is a alternative use of the asset or not, as well as okay, value always required the assessment of the highest and best use. Okay, so what is the highest and best use? Or you have which four parameters you have to check out to identify highest and best use? Technical, legal, social, नहीं, social नहीं and आएगा. market. Technical, legal, Technical, legal, financial, and finance, and economic. economical. Okay, so technically fit is it is a legally fit, मतलब legally we can use or not. Then it is a financially affordable or not. If three parameters come after the using, is provide the any economic positive economic benefit or not. Okay? Last day we all also discussed earning relationship of earning and assets. Okay, so higher earning, higher assets value, simply. Yeah. So that and future outlook of the properties. This is again technology evolutions. ये प्रॉपर्टी इन अ फ्यूचर सेल आउट हो सकती है कि नहीं, दैट्स रिक्वायर्ड असेसमेंट ऑफ द एज, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एंड जनरेशंस ऑफ अ टेक्नोलॉजी. जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सोलार प्लांट, इनिशियली सोलार प्लांट जब आज के 10 साल पहले लगने शुरू हुए थे 13 14 या 15 में, एट द टाइम कॉस्टिंग वाज इन रेंज ऑफ द पर मेगावाट 10 to 12 करोड़. आज वही सोलार प्लांट्स अवेलेबल है एट रेंज ऑफ द 4 to 5 करोड़ पर मेगावाट. सो व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द प्रॉपर्टीज? We have find out जैसे पहले as a storage device we are using the CD. Now we are using the pen drive. Before the CD we are using the floppy. So if product become obsolete or there is a no demand, so again there is a reductions or loss in the value of the asset who is producing or manufacturing the assets. So all the macro identification and micro identifications required sharp evolutions when you are doing the valuation for the secure landing. Then suitability and stability of the property. Suitability मतलब for whatever production license given, name of the product, yeah, type of the product, and capacity of the product, manufacturing capacity of the product. For that, the process line or machinery installed are suitable or not. Yeah, any alternation required or not. If it is suitable, then how it is stability? That is related to the wear and tears. Yeah, how maintenance are provided there, the preventive maintenance or shutdown maintenance or schedule maintenance, how operators are knowledgeable, okay, provide sufficient manpower or not, skilled manpower are employed or not. That's we have to require. Then price and price trend. Okay. So at which price it was a purchase, at which price as on date of valuation available, and in future at which price mostly it's may sellable. सही है. तो बहुत सारी एसेट है जिसका प्राइसिंग एज ए न्यू तो इंक्रीज होता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू एसेस द मार्केट, एसेट को सोल्व करने जाओगे तो यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टी इन रिकवरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. And there is a very rare market for the second-hand machineries. Okay, each and every machinery in a second-hand market is not sellable. इंडिया में आप भी देखोगे कि मशीनरी सेकंड हैंड में लेने जाओगे तो सारी मशीनरी यू विल नॉट फाइंड इट इज अवेलेबल फॉर द सेल एट इंडिविजुअल लेवल पे.
और एज ए होल लेवल पे, मतलब एज ए होल लेवल पे, फ्रैक्शन लेवल पे या पार्ट लेवल पर. So these are the points that you have to remember while making the valuation for the secure lending or mortgage purposes. Okay, what basis of value you have to select? So whatever the under the SOP of the your financial institute, many financial institutes are looking a market value, many looking a fair market value. So that value, market value or fair market value, you have to provide in your reports. Okay. So the factor that you have to focus, that is the technical, legal, social, marketability, price and strength while making the assessments, yeah, evaluation process for the mortgage purpose. Okay. So same types of procedure you have to not follow for each and every type. Just like you are here adopting the market value, so you have to follow the definition of the market value. Okay, just like a willing seller, willing buyer, arm's length of transactions, each has acted prudently and knowledgeably without compulsion when it's going to sold, at which price that may be a receivable. And market value may we have to take care of the both things, seller and buyer. Okay, mostly we are taking care of the seller. भाई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बेचने जाएगी तो 100 रुपए मिलेंगे, but any buyer is there in a 100 rupees market or not. Okay, so we have to also evaluate the buyer's trend or buyer's market, because each and every machineries are not sold out in the second-hand market, or many times investors are not interested to purchase a second-hand machineries. Okay, yeah. Same for the insurance purpose. But here, whatever we follow, take in the mind, process में हमने जो चीज ध्यान रखी है, okay, what points that we have to do not take care in the when valuation of the doing for the insurance purpose. Okay, so same as a insurer and insured. So the company which is taking the responsibility of the financial loss coverage is an insurance. Against we are paying a premium. And insured, the person who is paying a premium for the financial coverage is called the insured. Okay. In insurance, you will find that terminology just like a premium, sum insured, over insured, or under insurance. So what is meant by the premium? Anyone? Premium का मतलब क्या होता है? Yeah, that is the amount paid amount by it should be paid in the insured to insurer. Okay. Amount paid by the insured to insurer for an annum to cover the financial risk. Okay. What is the sum insured? For how much Value decided by the insurance insured. Amount can be declared by the insured for the financial risk cover. Okay, sum insured कि भाई मेरा सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपया है, मतलब 1 लाख रुपए तक का मेरा फाइनेंशियल रिस्क कवर हो रहा है. What is the over insurance and under insurance? Over insurance more value than the market value. नहीं, more over insurance मतलब more value than the insurance insured value. insurance insured, sum insured. yeah insured value more सम इंश्योर्ड से ज्यादा आएगा. एग्जैगरेट करके इंश्योरेंस करना वो ओवर इंश्योरेंस. अंडर इंश्योरेंस का मतलब less amount of the sum insured. less. Sum insured is a less compared to the your damage or assets values. तो whenever we are, अब बताइए जब वैल्यूएशन फॉर द इंश्योरेंस करेंगे तो हमारी थॉट लाइन या प्रोसेस लाइन क्या होनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? Depend upon the policy.
एक तो पॉलिसी कि भाई फॉर which policies client is going to the get a sum insured under which policy. Okay, अब पॉलिसी पता है तो पॉलिसी में क्या पता होना चाहिए? If it is a reinstatement policy, then the reinstatement value will be given as a sum insured. Okay, so according to the policy, okay, your sum insured is based on the reinstatement or at the market value or say value at risk. Yeah. दूसरा क्या पता होना चाहिए? That is a perils. रिस्क क्या क्या कवर हो रहा है. देन recoverable which asset are covered. सही है, which assets are covered. Okay, so insure on the property means insure on the building, machinery, stocks, whatever against the fire and applied burglary and this one. So according to the your policy, what are the covered? It is a fire, applied palace, burglary, risk, erection commissioning के लिए लिया गया है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है. सही है, तो क्या कवर हो रहा है और क्या कवर नहीं हो रहा है. सो नॉर्मली हमें पता है कि भाई जो जनरल फायर पॉलिसीज है उसमें लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, अनएक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डैमेज, रायोट, स्ट्राइक एंड अबाउट द 13 perils are covered. So first we have to knowledge about the which types of insurance policy our client or insured is going to take under this insurance policy, which are the assets which are covered and which are not covered. If there is a additionally add-on available or not. Okay, add-on matlab perils, risk. Which is not covered in the beginning of the standard policy that we make covered based on the paying a extra premium. riders. Additional risk covered by paying additional premium. Yeah, सही है. Now valuation के लिए our base of value will be restatement value or value at a risk or say market value. What do you mean by the reinstatement value? ओरिजिनल स्टेट ले आने के लिए कितना खर्चा होगा, दैट इज सही है. तो reinstatement cost मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं. हाँ, पूरा वो मशीनरी या जो प्लांट जो भी डैमेज हुआ है वो नया खरीद कर रीइंस्टेट करता है तो तब तक की पूरी कॉस्ट विल बी अ रीइंस्टेटमेंट वैल्यू. मतलब सिंपली हमारी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इट विल बी ट्रीटेड एज अ रीइंस्टेटमेंट वैल्यू. मशीनरी को रीइंस्टेट करने का पूरा खर्चा मिलेगा, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू. और व्हाट यू मीन बाय द indemnity value or value at risk? If machine is damaged, so client will get a replacement value minus accumulated depreciations. Depreciated value client को मिलेगी, not a value of a reinstatement. नई मशीनरी खरीदने की प्राइस या कॉस्ट नहीं मिलेगी. ओके, उसमें से जो भी जितने साल भी एसेट पुराना होगा या फिजिकल कंडीशन जो भी होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कट करके अमाउंट मिलेगी. सही है, स्टैंडर्ड पॉलिसी. हाँ. So the cost necessary to replace, repair, refilled asset insured condition extends to equal but not a better, more extensive conditions extend to the damage occurred. तो जितनी पुरानी मशीनरी थी उतना डेप्रिसिएशन कट करके उसको पेमेंट दिया जाएगा. So normally amount payable is equal to assess value sum insured divided by risk insurable. So under insurance जो होता है तो pro rata basis पे under insurance amount
कट की जाती है। इफ इट इज अ 10% अंडर इंश्योरेंस, तो आपका जो पेएबल है वो 10% रिडक्ट होगा, प्लस जो स्टैंडर्ड रिडक्शन है वो तो होने ही होने हैं। डेप्रिसिएशन, सैल्वेज, हाँ, मतलब जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे 10,000 तक कोई क्लेम नहीं मिलेगा, सही है, वो सारे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो होने ही होने हैं। बट एज अ वैल्यूअर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द, by according to the policy which base of value I have to derive, reinstatement value or value at risk. ठीक है, अब क्या करना है? सो भाई, जैसे हमने मॉर्गेज के लिए आइडेंटिफिकेशन, लीगल, टेक्निकल, एडुकेशन, आउटलुक, प्राइस एंड प्राइस स्टैंड, ये सब कुछ नहीं देखना है हमें। इंश्योरेंस करते हैं तो मार्केट आउटलुक नहीं देखना है, प्राइस ट्रेंड नहीं देखना है। भाई, मशीनरी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है जो रीबिल्ड करके मिलने वाले हैं, जो जब मशीनरी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसी स्पेसिफिकेशंस का मशीन आफ्टर द कितने का है? डैमेज क्लाइंट को मिलेगा। सही है, मार्केटेबल है कि नहीं, इट इज नॉट अवर हेडेक व्हेन यू आर डूइंग द वैल्यूएशन फॉर द इंश्योरेंस। प्राइस ट्रेंड क्या है, इट इज नॉट हेडेक। सही है, और व्हाट यू मीन बाय द रिस्टेटमेंट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, दैट इज द बेस ऑफ वैल्यू जो हमारा है। साथ में जो डिडक्शन और एडिशन होते हैं, दैट डिमोलिशन कॉस्ट और रिमूवल ऑफ द डेब्रिज कॉस्ट available, if available, how much it is available, fees associated with the reconstruction, architect, surveyor, engineering available, up to the which percentage available, if there is any rider or add-on available to increase these fees or contingency. Third thing, provisions of the inflations, betterment or obsolescence is available or not. Okay, what do you mean by the provision of inflation in a policy? increase the फ्यूचर cost, में प्राइसेस increase the बढ़ cost. सकता है, उसके लिए इंक्रीज द प्रोविजन। कॉस्ट मतलब हाँ, price. अगर इन्फ्लेशन प्रोविजन है, मतलब 1 साल का इन्फ्लेशन इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस। ओके, 1 जनवरी पे मेरी मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100 रुपया थी, मेरा डैमेज हुआ इन जून और जुलाई में, तब मशीन की जो प्राइस थी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो बढ़ के 105 रुपया हो गई। So it is not a, if inflation provision that, so it is not a undervalued। 105 रुपया जो 6 महीने में इन्फ्लेशन हुआ है, इट इज ऑल्सो कवर्ड। सो 1 साल का जो भी इन्फ्लेशन है वो प्रो रेटा बेसिस पे कवर्ड रहता है। व्हाट यू मीन बाय द, हाँ, एनी क्वेश्चन? No, no. ओके, व्हाट यू मीन बाय द बेटरमेंट ऑप्शंस, प्रोविजंस ऑफ द बेटरमेंट? नया मॉडल आ गया, नया मॉडल आएगा इफ पॉलिसी विथ अ बेटरमेंट, तो भाई इंश्योरेंस में क्या मिलता है, होता है जो पुराना मॉडल, जो एसेट डैमेज हुआ है वही एसेट आपको मिलने वाली है। इट मे बी एट रीइंस्टेटमेंट वैल्यू और एट अ वैल्यू एट रिस्क और मार्केट वैल्यू। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में बेटरमेंट क्लोज है तो उससे अपग्रेडेड वर्जन अलाउेबल हो जाएगा टू परचेस्ड। सही है, तो बेटरमेंट मतलब वी कैन सजेस्ट द क्लाइंट्स कि टेक अ पॉलिसी विद प्रोविजंस ऑफ द इन्फ्लेशन बेटरमेंट्स। सही है, अगर कोई मशीनरी ऑब्सोलेट हो चुका है, ऑब्सोलेट मशीन की जगह आफ्टर द डैमेज ही कैन परचेज द न्यू मशीनरी विद अ न्यू मॉडल, बट 1 जनरेशन अपग्रेड ऑन। 1 जनरेशन अपडेट। सही है, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना के बाद 5 जनरेशन हो गई है, वो जनरेशन मिलेगी उसे। बट इट इज अ इंश्योरेंस एक्चुअली क्या है? ओके, इट इज अ कवरेज ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस में कोई एडवांटेज या प्रॉफिटेबल बात नहीं होती कि मैं पैसा कमा लूं। सही है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर होता है यहाँ पे। So while you are doing the valuation for the insurance purpose, you have to take care of type of policies, perils, inclusion and inclusion of the cost element, salvage value, scrap value, cost of the removal और damages, ये सारा आपको स्टडी करना पड़ेगा। नहीं के
उसकी मार्केटेबिलिटी, प्राइस ट्रेंड, लीगल टर्म। लीगल में क्या होगा बताइए? कोई बंदा इंश्योरेंस किस चीज का ले सकता है? मैं उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप होनी चाहिए, या इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे बैंक, हाइपोथिकेशन है। हाँ, अपनी मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेती है, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका। अगर लीगल ऑनर मैं नहीं हूँ या फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है मेरे को कोई, तो आई कैन नॉट टेक अ इंश्योरेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मेरे पड़ोसी की कार की इंश्योरेंस मैं नहीं ले सकता। हाँ, बट मैंने अगर उसको लीगली पैसे दिए हैं कार खरीदने के लिए, एग्रीमेंट्स है, एंड आई एम एबल टू डू, देन आई कैन टेक। ओके, या एनी डाउट किसी को भी? यस सर। हाँ बोलिए। सर पैसा दिया है तो मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ, पैसा देने भर से या मेरे को हाइपोथिकेट होने से? पैसा देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नहीं, मतलब मैं बोला ना लीगल वे, इंटरेस्ट में आता है सर। लीगल वे, डॉक्यूमेंटेड। ऐसे मतलब मैंने आपको यूं ही पैसा दे दिया कि आप मेरे फ्रेंड्स हो, देन आई कैन नॉट टेक इंश्योरेंस। नहीं, इफ आई हैव गिवन यू अ टर्म लोन फॉर अ कार and you are taking insurance, I take insurance on that car even if it is not hypothecated to me? Yeah, of course. Even it's not hypothecated to me. Still I can take insurance, sir? Take I It insurance. is not a legal way to pay the money for others' car. The person who gets the hypothecated, they are having a legal authority. नहीं, hypothecation and a term loan agreement are two different. Okay, so now आप समझिए, लोन देने का राइट आपको नहीं है, जी सर, बैंक्स को ही है, एनबीएफसी को ही हो। So first, what do you mean by the hypothecation? When any loans that is creation of charge on that asset. Creation of charge. Right. What do you mean by the mortgage? That's again a creation of charge. That's one mode of creation of charge. But mortgage में क्या होता है? मॉर्गेज भी फिर बहुत तरह के हैं सर। एक टाइटल डीड होगा, एक इक्विटेबल मॉर्गेज होगा, एक कंस्ट्रक्टिव का। मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मॉर्गेजी को आप सबमिट करते हो। हाइपोथिकेशन में क्या होता है? हाइपोथिकेशन में यू आर, मतलब आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है दैट यू आर नॉट सबमिटिंग, आपकी ओनरशिप या आपका आरसी बुक या जो भी कुछ है। मॉर्गेज होता है इनमूवेबल प्रॉपर्टीज में, हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज में। मूवेबल प्रॉपर्टी में सही है। अब मूवेबल मशीन का बिल हाइपोथिकेट नहीं कर सकते कि भाई मैंने मशीन, मेरे मकान के डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में वो हो जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे तो पैसा ले जाओ। हाइपोथिकेशंस में मैं बिल या मेरी आरसी बुक सब कुछ हाइपोथिकेट या ऑनर जो भी लैंडर है उसको मैं नहीं देता। सही है सर मैं देता नहीं हूँ सर। चलिए लेट्स नॉट, व्हाट यू मीन बाय द सेकंड टर्म? नहीं, सेकंड दैट इज अ प्लीज। प्लीज क्या है? प्लीज सपोज बैंक लोन चाहिए, बैंक में गोल्ड डाल के प्लेज हम लोन ले लेंगे। Assets remain with the lender. Yeah. Assets will keep at lender and take the loan. एसेट प्लीज कब होता है? कैसी एसेट के लिए होता है? लीज। लीज एसेट को यूज करने के लिए लीज लेता है। फाइनेंशियल एसेट के लिए प्लीज वर्ड है। मेरे पास 100 शेर है, मैं 100 शेर गिरवी रखता हूँ, तो दिस इज आई एम डूइंग अ प्लीज। एक्चुअली मैं 100 शेर उसके पास नहीं जाते, वो तो मेरे अकाउंट में ही रहेंगे, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस कि मैं सेल नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन। ओके, सो दैट इज, सो देयर इज अ 3 टर्मिनोलॉजी, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशंस और प्लीज। क्या आप रखते हो? Sir, एक minute, if you allow me, I am new to this subject. I mean, here some people are sounding experienced, so kindly get into the more detail for us.
Yeah, I'm of not course. able to follow it, please. Yeah. Anyone? What do you mean by any difference between the mortgage, hypothecation, and pledge? प्लेज एक बार प्लेज बोलना सर. व्हाट इज प्लेज? एक बार रिपीट करो सर, रिपीट करिए. What is the difference between a mortgage, hypothecation, and pledge? Pledge में मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है. suppose we need loan, so property asset will be at my premises only, but I will give the charge to the lender and take the loan from him. That is pledge. Okay. Then hypothecation means suppose I have taken the asset into my custody, but even then I give the charge to the lender. I will be using the asset, but a charge will be, the authority will be in the name of the lender. That is hypothecation. Okay. So, yeah. Yes, sir. तो हाइपोथिकेशंस जो है, सर पहले मॉर्गेज समझ लेते हैं. मॉर्गेज है, इट इज फॉर द इनमूवेबल प्रॉपर्टीज. इनमूवेबल के प्रॉपर्टीज के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सेल डीड या व्हाटएवर, वो मॉर्गेजर अपने पास ले लेता है. प्रॉपर्टी का राइट टू यूज तो हमारे पास ही रहता है. सही है. तो इनमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए वर्ड है, इट इज अ मॉर्गेज. अब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जैसे हाइपोथिकेशन वर्ड है, जहां पे वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लेता. सही है. बट ही कैन टेक द फिजिकल पोजेशंस ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसका रीपेमेंट शेड्यूल वे में नहीं हुआ. सो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों, दैट इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टीज है. अपना कार हो गया, मशीनरी हो गया, मकान हो गया, या कुछ भी. अब तीसरा भी अगेंस्ट में आप पैसा ले सकते हो. दैट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. मेरे पास शेयर है, बॉन्ड है. सही है. मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, उसको मैं उसके अगेंस्ट में मैं पैसा ले सकता हूं किसी को दे के. भाई मेरे 100 शेयर है रिलायंस के, उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा दे, और मार्केट में आपको देगी पैसा. तो इट इज कॉल्ड द प्लीज. इट इज नॉट अ टेंजिबल एसेट्स. देन ऑल्सो यू आर गेटिंग money against the your share. असल गोल्ड रखना भी तो प्लेज हो जाएगा ना. अब गोल्ड रखना भी तो प्लेज. गोल्ड ऑल्सो प्लेज बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. नहीं sir, pledge can also be against grains, it can Gold, be jewelry against also. property, it can be against anything. Yeah. सो जो फाइनेंशियल एसेट है विच इज इजीली कन्वर्टेबल, अगर आप अकाउंट पढ़े हैं तो करंट एसेट, नॉन करंट एसेट. करंट एसेट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल, नहीं, मतलब विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश और कैश इक्विवेलेंट. और नॉन करंट एसेट मतलब दोस हु आर द नॉट कन्वर्टेड इजीली इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. सही है. Yeah. Any more question? देखिए प्लेज में जो पोजेशन होगा वो मॉर्गेजर का हो जाएगा. आप अगर एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हैं गोल्ड के, लीगल राइट्स पोजेशनर के हो जाएंगे, मतलब मॉर्गेजर के. राइट टू यूज तो आप मॉर्गेज करते हो, प्लीज करते हो, या कुछ भी करते हो, वो एसेट तो रहेगी, राइट टू यूज तो रहेगा जो ऑनर है उसी के पास, बट उसकी मार्केटेबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी. देखिए 65 इंपॉर्टेंट टर्म्स का एक आपको प्रेजेंटेशन दिया गया था तकरीबन एक वीक पहले. आई थिंक किसी ने भी नहीं देखा है. देखा है, पार्टली देखा सर. देखा है. उसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है सर. यस सर, यस सर. And especially for Mr. Ghosh, it was prepared for this session only. And if you have not viewed, view it today only. Yes, sir. Please continue. Sorry to interrupt, sir. Okay. Next, you are going with sir the merger and acquisition purpose valuations. Okay. So merger और acquisition purpose valuations के लिए
as a base of value, we may go for the fair value, investment value, and synergetic value. Okay. So fair value, that is defined in the Indian Accounting Standard 16. So it is a price that would be receivable at the sale of the asset or paid transfer of the liability in orderly transactions between market participants at major dates. जब भी एसेट सेल करूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, इट इज अ फेयर वैल्यू. ओके, व्हाट यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट वैल्यू? So it is a value of an asset to a particular owner or prospective owner for individual investment or operational activities. Okay. Investment value may differ from the person to person. It is for the particular owner or prospective owner. मुझे ये एसेट इतने में खरीदना चाहिए. Particular for me, it is called the investment value. ये खरीदने के बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू. है ये. देखिए, आई एम डूइंग द वैल्यू बिजनेस ऑफ द सीमेंट प्लांट और मैं कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट खरीदता हूं तो आई विल नॉट गेट एनी एडिशनल बेनिफिट बाय द परचेजिंग द फार्मास्यूटिकल प्लांट्स. सो माय इन्वेस्टमेंट वैल्यू मे बी अ डिफर फॉर द परचेजिंग ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स. मैं सीमेंट इंडस्ट्री में हूं और मैं दूसरा सीमेंट प्लांट खरीदता हूं तो आई विल मे गेट सम एडिशनल एडवांटेज, या मेरी जो बिजनेस नो हाउ है या बिजनेस स्किल है, नॉलेज है, दैट विल बी आल्सो डायरेक्टली इम्प्लीकेबल फॉर दैट बिजनेस. सही है. सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू मे वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज ओनली फॉर द पर्टिकुलर ऑनर और प्रोस्पेक्टिव ऑनर ओनली. जबकि जो सिनर्जेटिक वैल्यूज है, it is a result of combination of two or more asset or interest where combined value is more than sum of the separate value. मतलब दो एंटिटी, दो कंपनी साथ में मिलके कोई बड़ी कंपनी बनाती है और उसकी वैल्यू दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड द सिनर्जेटिक वैल्यू. तो सिंपली दैट इज अ 1 + 1 = 11. इट्स कॉल्ड द सिनर्जेटिक वैल्यू. Now, here, what do you mean by the merger and what do you mean by the acquisitions? First, what do you mean by the acquisition? Taking another asset into our account. Takeover of company. That is takeover. Acquisition. That is I am purchasing the any asset and I am become a owner of that. मतलब full rights of control transfer हो जाते हैं. इट्स एक्विजिशन. मतलब किसी और कंपनी को मैंने खरीदी लिया और मेरी कंपनी के साथ में मिला दिया. मर्जर का मतलब क्या होता है? दोनों एंटिटीज मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो, कंबाइन होगा. मतलब मैनेजमेंट और राइट्स ऑफ कंट्रोल जो है वो भी दोनों के पास रहेंगे. मे बी अ परसेंटेज, दैट मे बी अ डिफर. सही है. सो जो राइट्स ऑफ कंट्रोल है वो पूरे ट्रांसफर नहीं हो जाते मर्जर में. जैसे आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ तो आइडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव ऑनर रहेंगे और वोडाफोन के भी रिप्रेजेंटेटिव ऑनरशिप में रहेंगे. सही है. जबकि आइडिया एक्वायर वोडाफोन ऐसा होता तो वोडाफोन की सारी एसेट का ऑनर आइडिया बन जाता. इट इज एक्विजिशन. सो whenever you are dealing with a merger acquisitions, that you have to follow the fair value. मतलब accounting standards में जो guidelines दी है that we have to follow. Okay. यहाँ पे you also take care of the कि भाई acquisition हो रहा है, it is a whole part or fractions क्या हो रहा है. और after merger or acquisitions, whatever the asset will be a surplus, non-operative or off-base balance sheet generate होगी कि नहीं. मैंने सीमेंट प्लांट, दूसरा सीमेंट प्लांट खरीद लिया. सीमेंट प्लांट के पास 100 एसेट थी, बट मुझे जरूरत थी
सिर्फ 80 एसेट मेरे काम आने वाली है, 20 विल बी ए सरप्लस और नॉन प्रोडक्टिव आफ्टर माय एक्विजिशंस. So if any surplus will be generated or a non-operating asset is generated, if in a merger or acquisition, if there is a off-balance sheet assets, कि मैंने किसी कंपनी को खरीद लिया, उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट पे या लीज पे 10 मशीन थी, and this lease will be not transferred to me after the purchase. So this off-balance sheet asset का I have to make a separate treatment. Okay. Any doubt? Merger acquisitions में valuation for the stamp duty purpose. Okay. अब जो stamp duty लगती है, it is only for a immovable asset. Okay. Movable asset पे stamp duties are not applicable. तो जब भी आप स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन करते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई मूवेबल प्लांट एंड मशीनरी. ओके. नॉर्मली अब इंडिया में क्या है कि भाई वी आर गेटिंग द लाइसेंस फॉर द इनमूवेबल एंड मूवेबल. सो ऑल द प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट movable assets. How we can distinguish machinery is a movable or immovable? So if you can relocate the machine from one place to another place without damaging it, or real estate attached with it, then it's a classified as a movable. मतलब किसी मशीन को आप उस मशीन को डैमेज किए बिना, या वो जिस रियल एस्टेट में लगी है, मतलब जिससे अटैच है, उस रियल एस्टेट को डैमेज किए बिना आप एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर सकते हो, देन इट्स कॉल्ड द मूवेबल एसेट. अदरवाइज इट इज अ इनमूवेबल एसेट. अब स्टैम्प ड्यूटी से लिए वैल्यूएशन करते हो, तो स्टैम्प ड्यूटी में कौन सी वैल्यू डिफाइंड है? व्हाट इज द बेस ऑफ वैल्यूएशन डिफाइंड? सर एक एग्जांपल देंगे सर, मूवेबल रिमूवेबल एसेट. हाँ देंगे. सही है. आपका लैपटॉप है, इट्स अ मूवेबल एसेट और इनमूवेबल एसेट? मूवेबल. मूवेबल एसेट. सही है. आपका 10 टन का बॉयलर है, वो इमूवेबल. आप 10 टन का बॉयलर विदाउट डैमेजिंग इट, उसे डिसमेंटल किए बिना, या रियल एस्टेट तो अटैच है उसको डैमेज किए बिना एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट नहीं कर सकते हो, तो आपका जो तो इनमूवेबल हो जाएगा. सही है. मैनी टाइम्स क्या होता है कि भाई आप फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में गए होंगे, तो जब फार्मास्यूटिकल प्लांट्स के इरेक्शंस चलते हैं, तो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, उसमें से मशीन घुस जाती है अंदर. सही है. जब प्लांट का इरेक्शन खत्म हो जाता है, तो एज पर द इंग्लिश सर. या सो हाँ कोई बात नहीं. So if you find that erection of the pharmaceutical plants, at the time of the erections, to put the machine inside, there is a large door space. After erection, commissioning is completed and commercial production starts as per the regulations to control the atmosphere. Okay, ये सारे दरवाजे और door shutters are making the smalls, and सारे machines are covered by the air box. अब ये to relocate the pharmaceutical machine from one to another place, again you have to damage the real estate. मतलब आपको you have to break down the doors को तोड़ के बड़ा करना पड़ेगा, then you can. So all the pharmaceutical machinery which cannot relocate from one to place rather than damaging the real estate become immovable properties. Okay. Yeah. Any doubt? Sir, one question. हाँ बोलिए. Sir, like old plant, we have purchased from other place, and we have to install everything as per original. So in that case,
What is your comment, sir? मतलब you are relocating plants without damaging. Yes, sir. No, no, that replace and rebuild as previous. So in this case, we have Replace to मतलब you are purchase the new machinery. not new, sir. That is So- old machine we have purchased already existing, and we have to install another place. Okay, तो and if okay, then production is giving at the same rate. So in Same that rate. case, same rate, sir. okay, So in that case, we have to consider as a movable already there, because you have to shift it another place. No, that is movable. but at the time of shifting, Yes. you have damaged the machinery or not, or Yes. रियल एस्टेट अटैच विथ इट और नॉट. अगर आपने कोई डैमेज नहीं किया है, जैसे टैंक को डिसमेंटल करने के वक्त उसकी पाइपिंग वाल सब निकाला नहीं है, सही है, तो Yes, sir. इट इज अ मूवेबल एसेट, अदरवाइज इट इज अ इनमूवेबल एसेट. Okay, sir. Okay. But my point is, after dismantle and again is rebuild, तो उसमें सर कैसे क्या बोल सकते हैं उसको? सर स्टैम्प ड्यूटी कब पिक्चर में आती है? मूवेबल एसेट नहीं हो. नहीं, जब व्हेन यू आर परचेजिंग द एसेट और उसका आप रजिस्ट्री करते हो. Yes, sir. Yes. अब जहां पे एसेट है उसी लोकेशन पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी लायबल रहेगी ना, नॉट एट अनदर लोकेशन. Right, sir. Right, sir. Okay. So you have to pay a stamp duty at the place where you have purchased. बाद में परचेज करके आप उसे रीलोकेट करते हैं, वहां पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली नहीं है. नहीं. ओके. सही है. तो हमारा एक केस स्टडी इसकी रिलेटेड है. ओके. सो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में कौन सी वैल्यू डिफाइन की गई है? एनीवन? बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या रहता है स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में? प्रॉपर्टी टैक्स, गाइडलाइन वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू. ओके, नॉट अ मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू. वहां पे जो डिफाइन किया है फेयर मार्केट वैल्यू, और आपको आपके रिपोर्ट में एज पर द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी. इट इज सेम लाइक अ फेयर वैल्यू. Whatever the price realized at the time of sale of the asset in the open market, it is a fair market value. Okay. When you are doing for the financial statement, okay, हमने बोला कि अकाउंटिंग के हिसाब से करना है, तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पस से वैल्यूएशन करते हो तो क्या चीज देखनी पड़ेगी आपको? ओके, सो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेट एज पर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो चीज वैल्यूएशन कर रहे हो एसेट है कि नहीं. इफ एनीथिंग, एनी एसेट इज विल बी यूज्ड for more than one accounting period, it will be considered asset. Otherwise it will be a not considered asset. सही है. एक फाइनेंशियल पीरियड से ज्यादा यूज होने वाली है, then only it is considered as assets. Then you have to deliver as per the accounting standard fair value. Okay, you have to use a useful life as per the described in the schedule 2 of the company act. Okay, वो हमने डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन ऑफ द कंपनी एक्ट एंड इनकम टैक्स में भी ये चीज डिस्कस किया था. If you are not taking the useful life as per the schedule 2, then you have to provide the supporting. You have to use the residual value 5% of your replacement cost or historical cost. More than 5%, you have to provide the justifications. Okay, you have to provide the depreciation using the which method? डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से दोगे आप? स्टेट लाइन, WDV और स्टेट लाइन, WDV, then WDV, yes, SLM, state line, SLM, then
units of UOP. constant percentage methods. नहीं, यूओपी का फुल फॉर्म क्या है? Unit of price. Unit percentage. Unit of production. यूनिट ऑफ production. Yes, unit of production. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन क्या हो सकता है और उसमें से कितना प्रोडक्शन निकल गया. ओके, टोटल प्रोडक्शन हो सकता है मशीन से 100 और उसमें से 40% प्रोडक्शन हो गया तो 40% डेप्रिसिएशन. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे. ओके, then you have to do the componentizations. We have also discussed, but nowadays it's not mandatory. You have to check the impairment of the asset. What do you mean by the impairment loss? Anyone? किसी को याद रहा हो तो कल का? Yeah. Suppose market का price से suppose book value ज़्यादा दिख रहा है, then the difference is impairment. सही है. Carrying amount exceeds its recoverable amount. Carrying amount मतलब जो books of account में जो है exceeds is a recoverable amount. What do you mean by the recoverable amount? It is market price, fair price. नहीं. Market recoverable market price. नहीं, recoverable amount क्या है? Products. Fair value. Higher of fair value less cost to sell. Yeah. And value in use. Fair value less cost to sell and value in use में से जो ज्यादा होगा, it is considered as a recoverable amount, and recoverable amount are compared with the carrying amount. If carrying amount exceeds, then impairment loss detected. If not, then impairment loss is not detected. Okay, so revaluation method, allocation of the revaluation method, it is not part of the valuer. ये accounting side से करेंगे. So you have to follow Indian Accounting 16 property, plant and equipments में जो guidelines दी है, मतलब ये सारी जो guidelines दी है that you will find in the Indian Accounting Standard 16 property, plant and equipments में आपको मिलेगी. Okay. कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो? सर वो इम्पेयरमेंट वैल्यू का बताइए सर. हाँ, हम करेंगे डिस्कस, आगे भी आएगा इम्पेयरमेंट. ओके, वैल्यूएशन फॉर द ऑक्शन. जब ऑक्शन के लिए चाहिए तो यू हैव टू डिलीवर. आपके बेसिस हो सकते हैं मार्केट वैल्यू, ऑर्डरली लिक्विडेशन, फोर सेल वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू. What is the difference between the orderly liquidation and for sale value? Orderly means time Duration will of be, time. sufficient time will be available factor, for time sale factor of the asset. 416 means within 3 months. The marketing. In an orderly liquidation, sufficient time is given for the marketing. While in a for sale value, sufficient time is not given for the marketing. Even buyer has not given time for the due diligence. एसेट क्या है वो जानने के लिए, कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करने के लिए भी टाइम नहीं दिया जाता. Okay, so how auction has take place? Market value, liquidation value, or a for sale value. यहाँ पे we have to check out the highest value that may be at existing in situ, alternative use ex situ. Okay, what do you mean by the existing use in situ, ex situ, alternative use in situ, ex situ? In situ वहीं पे रहेगी, ex situ वहां से निकाल ली. ex situ वहीं कहीं से निकाल के दूसरी जगह. Existing use जो यूज है वही यूज रहेगा प्लांट का, और अल्टरनेटिव यूज बदल जाएगा. अल्टरनेटिव यूज में कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा. ओके, या विजिबल सबको ये पेंट. ओके, एक है एग्जिस्टिंग यूज, मतलब whatever the plant design at the time of inspection or valuation वही यूज रहेगा. एंड इन सिटू का मतलब एट प्लेस, जहां पे है वहीं पे जैसी मशीनरी है जिसका जो यूज है उसी यूज के लिए वैल्यू. ओके, सेम एग्जिस्टिंग यूज
एक्स C2 का मतलब क्या होगा? उसको वहां से निकाल के दूसरा जगह में फिट करके दूसरा चला जगह में लगा जगह पे वैल्यू एट अ एक्स लोकेशन। ओके, तो अगर वैल्यू एग्जिस्टिंग इज इन C2 100 रुपीज है, तो एक्स C2 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? कम कम ज्यादा है। कम आएगा। तो क्या The value would be more. हाँ, तो no कैसे Used डिराइव to come. करेंगे? no The cost of dismantling dismantling and and relocation to the other. dismantling and installation charges we have to consider. Okay? तो भाई इन C2 जहां एग्जिस्टिंग यूज है वहां से डिसमेंटल करके दूसरी जगह ले जाने का जो भी खर्चा है दैट विल बी डिडक्टेड। Yes. Yes. सही है? हाँ, right. ओके, देन इट इज अ अल्टरनेटिव Less than. X2 is less than NC2. हाँ, अल्टरनेटिव यूज इन C2, इसका मतलब क्या होगा? Same place Location of the में plant same रहेगा. use will be different. That means for some other product, the same machinery will be used in the same position, same place. We are making some alternation in the machinery that will maybe we are adding some machinery or we are deleting some machinery or we are refurbishing some machinery, किसी प्लांट का जो एग्जिस्टिंग यूज था उससे बदल देते हैं, प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, बट प्लांट वही जगह रहेगा। सही है? So how alternative use in C2 will be find? So existing in C2 में भी जो भी addition deletion होंगे, that addition deletion we have to make and we are finding the alternative use X C2. Sorry, alternative use in C2. अब alternative use X C2 का मतलब क्या होता है? मशीनरी वहां ले जाके वहां मॉडिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट के लिए किसी एक्स लोकेशंस पे वैल्यू। सही है? सेम थिंग, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी वैल्यू टू सेलर। क्या रहेगा? Alternative use in situ is would be roughly the same कम as रहेगा, अल्टरनेट यूज एक्स2 में कम रहेगा वैल्यू टू द नहीं, ये तो चार चीजें खत्म हो चुकी। सही है? अल्टरनेटिव यूज ठीक है वैल्यू टू द सेलर। वैल्यू टू, देखिए तीन चीजें होती है, वैल्यू टू यूजर, सॉरी सेलर, वैल्यू टू बायर एंड वैल्यू टू ऑक्यूपायर। वैल्यू टू सेलर का मतलब क्या होता है? Selling value. The selling price I mean Selling price. which he is expecting, that is वैल्यू टू सेलर का मतलब ये होता है कि आफ्टर सेलिंग द एसेट सेलर क्या लॉस करता है। तो सेलर इज लूजिंग वॉट एवर एंटीसिपेटेड बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। अगर मेरे पास एक इंडस्ट्री प्लांट है, मैं किसी और को बेच देता हूं, इसका मतलब इस प्लांट से मुझे जो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले थे वो सारा बेनिफिट आई एम सेलिंग, दैट बेनिफिट विल बी ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। Yes. सही है? एडवांटेज और बेनिफिट। या एडवांटेज और बेनिफिट। व्हाट यू मीन बाय द वैल्यू टू सेल बायर? That is the value by buying that asset, what he will be getting benefit. What he will get the additional benefit या benefit from the buying the asset. So all the हाँ सही है, all the future benefits anticipated to the asset transfer to the buyer, it is a value to buyer. Now value to buyer may be a differ from buyer to buyer. सही है? जैसे यही हम एग्जांपल लेते हैं, मेरा सीमेंट प्लांट है, मैं किसी और सीमेंट प्लांट को एक्वायर्ड करता हूँ, तो उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ और होगी
rather than who is not involved in the cement business. कई बार we are hearing the news के acquire at the premium price 4x 10x पे किसी प्लांट को acquire किया because buyer is looking more advantage rather than value of the asset. सही है, उसने जो पे किया है उससे ज्यादा एडवांटेज दिखता है कि भाई मैं इसे 100 करोड़ में खरीद रहा हूं बट मुझे अगले 2-3 साल में 200-300 करोड़ मुनाफा होने वाला है. What do you mean by the value to occupier? Okay, value to occupier, it is just like a interest of the leasing. I am not owner of the asset, but I have right to use. तो उससे जो मुझे बेनिफिट होने वाले हैं, it is a value to occupier, interest of the lessee, yeah, whoever the occupier. Okay, so in terminology में किसी को कुछ डाउट? No. No. Okay. Okay, so when we are doing the valuation for the auction, we have to take care कि कहाँ पे मैक्स वैल्यू जनरेट हो सकती है, कैसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, and we have to take care of the marketability and market times and obsolescence of the machine. So ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी when we are doing valuation for the auctions. सही है, कई बार ऑब्सोलेट हो चुका होता है तो मार्केटेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, या कई बार लीगल कंप्लायंसेस होता है. भाई इंडिया में लीगल कंप्लायंसेस लगते हैं, यू कैन नॉट ऑपरेट, बट बांग्लादेश पाकिस्तान वहां पे या अफ्रीकन कंट्रीज में या वो लीगल कंप्लायंसेस नहीं है तो यू कैन ट्रांसफर. तो वहां पे कैसे वैल्यूज जनरेट हो सकती है. वैल्यूएशन फॉर द लीजिंग पर्पस. सो यहाँ पे वी हैव टू चेक what is the right interest and benefit of the lessors and lessees. Lessor interest क्या होता है एनी प्रॉपर्टी में, लीज में? मंथली इंटरेस्ट मिलना चाहिए. लेसर इंटरेस्ट क्या होता है? रेंट. रेंट कब तक? लीज पीरियड है, प्रॉफिटेबल यूज, पूरा लीज पीरियड एंड होने तक, लीज पीरियड तक, up to the unexpired lease period, up to the unexpired lease period. दूसरा क्या है लेसर का इंटरेस्ट? then ownership on the asset if it is not given to the lessee after the end of the lease period. Okay, end of the lease क्या होगा? If asset back to the lessor, तो end of the lease period लेसर को जो asset मिलेगी it is also its a interest. लेसी को क्या इंटरेस्ट है in a lease agreement? The ownership on the equipment till the lease period is over, and the returns on the right to use lease से जो एडिशनल बेनिफिट कमाएगा दैट्स द लेटेस्ट इंटरेस्ट. मैं आपको कार लीज पे देता हूं और बोलता हूं 1000 रुपीज पर मंथ मुझे पे करना है. ओके, एंड एनीवन इज ड्राइविंग अ कार and make a saving of the 2000 rupees per month. So 1000 rupees. So 1000 rupees he paying me, and 1000 rupees जो उसने पैसा बचाया है 2000 रुपीज सेव में, सो 1000 रुपीज वो मुझे एज ए रेंट पे करता है, तो 1000 रुपीज उसका लेसी का इंटरेस्ट बना, लेसी का बेनिफिट्स. सही है. सो जब ये फाइंड करते हो तो लेसिस, ग्रॉस इनकम, आउटगोइंग, नेट इनकम, लीज रेंट आपको एज पर द एग्रीमेंट्स फाइंड करना है. लीज पीरियड क्या है एंड टर्मिनेशन क्लोज. टर्मिनेशन क्लोज मतलब whether the asset can be, I mean, at the end of the lease क्या होगा एसेट के साथ? एसेट लेसर को वापस मिलेगी, एसेट लेसी के पास रहेगी, एसेट लेसी डिसमेंटल करेगा. ये कुछ भी हो सकता है टर्मिनेशन क्लोज.
So that you have to study. Risk factor related to the lessor and lessee. Residual value end of the lease period. ये है. Okay, so it is related to the risk factor. End of the product, the product life cycle, and technology evaluations that is related to the marketability of the machines before lease time or after lease period. सही है. Normally we value are never evaluating the trend of the product. Okay, then the tax structures. What are the benefit arise due to the lease transactions to the lessor and lessee? Okay, so ये सारी चीजें we have to keep in the mind while evaluating valuation for the leasing purpose. Yeah. Last, valuation for the disposal time. That is a simple. You have to take care of the residual value, salvage value, or scrap value. Okay. Anyone difference between the salvage value and scrap value? Scrap value because without, I mean, there will be no further use for Anyone, no scrap material. No further use. And for salvage, there will be further use. There may be further use for that material. Yes. Yes. Okay. So scrap value means your asset has lose. Material value. Asset has lose is a utility, and you are selling the asset at material content. It is a scrap value. Salvage value का मतलब asset has a utility for someone else or for another buyers. You are not selling the asset at material content. So you have to find out residual value, scrap value, or salvage value. Okay, residual value and scrap value is almost same. Residual value is a terminology related to the accounting standards. While ये scrap value and salvage value है, it is related to the technical valuation standards, IVS. And same time, you have to study the related law for the procedure of the dispose. So whatever cost of dispose will be occurred as per the law, that you have to deduct for the from the scrap value or salvage value for the valuation of the disposal. Okay, so it is a simple. यहाँ पे कुछ नहीं है. Yeah. So these are the purpose of valuations. Any doubt? किसी को यहाँ पर कुछ पूछना हो? Okay. Stamp duty rates will be provided, sir. Sorry? Stamp duty rates. Stamp duty? कितना लगाना है, क्या है उसका? वो तो state wise differ होता है, property to property. So you have to stack a stamp duty act में वो state का जो stamp duty act में current stamp duty rate क्या होगा वो check करना पड़ेगा. Okay. You have to check out the current stamp duty rate as per the Rady Reckner of the Stamp Duty Act of that state. It is related only land and building. And Nahin, what about plant and machinery? Where we get this stamp duty value? It is for the whatever immovable property is considered. तो वो immovable property का जो stamp duty rate होता है, that is directly applicable. और वहां पे जैसे stamp duty rates is not classified as पे land का इतना रहेगा, flat का इतना रहेगा, बंगलो का इतना रहेगा. सही. But what kind of questions come from this? अब सर वो मुझे कैसे पता होगा? नहीं मतलब Expected. I expected the question. सही है. हम डिस्कस करेंगे. एक पेपर है जो सैंपल पेपर है वो डिस्कस करेंगे. अभी देख लेते हैं. मेरे पास सैंपल पेपर हो तो
Most of the related questions are available in the mock test website. मॉक टेस्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है. Yes, sir. You can view these questions there, and let's save the time for the knowledgeable session. Okay, so may end of the session that we will discuss. अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, it is